Hello, Dr. Jyoti, ma'am. Shall we start? Yeah, sure. We'll start. Yeah. Okay. So, good afternoon, Jyoti, madam, and all the participants. On behalf of Vidyalankar Polytechnic, I once again welcome you for this faculty development program on NEP 2020. The topic for today's session is Assessment Reforms and National Assessment Center PARAK. And the speaker for this session is Dr. Jyoti Bhawane. She is an associate professor at the Center of Educational Studies, Indian Institute of Education, Pune. She has a doctorate in education and postgraduate in psychology and education. Her areas of research are teaching education, critical pedagogy, online education, learning assessments, and tribal education. So far, 10 PhD students and 12 MPhil students have been awarded under her guidance. She has conducted several research studies and currently she is the coordinator of ICSSR Special Study Project on Ethical Communitarism Tackling COVID-19 in Maharashtra, and recently completed two projects funded under UNESCO and IEA Germany on educational response to COVID-19. She published papers and contributed chapters relating to her specialization at both national and international levels. She recently contributed a thematic view of UNESCO on formative assessment and the continuity of learning during emergencies and crises, and is currently involved in writing a thematic paper on artificial intelligence for UNESCO. She likes to write on a critical perspective of education, especially relating to teacher education, teacher quality, and educational practices. She has also authored a book on ashram schools, teacher context and challenges 2012, and she has also co-edited two books, that is Theory and Praxis, Reflection of Colonization of Knowledge, and other book is The Imbecile's Guide to the Public Philosophy. Welcome, Dr. Jyoti Bhawane, ma'am, and you can start the session. Over to you, ma'am. Thank you. Let me... Is the screen visible? Ma'am, it is not shared. One sec. Let me just check. Yeah, now is it visible? No, ma'am, no. I think some network issue. It will be visible soon. It is a slightly network issue is there, I think. Now? Not yet, ma'am. Not yet, because that time it showed. One sec, let me just check. Why is it? Yes, ma'am. Now screen is visible. Yeah, thank you. Good afternoon, everyone. It's a bright sun afternoon here in Pune. As ma'am has already introduced about myself, the session that I'm going to take today, which is about assessment reforms and National Assessment Center, PARAK. Broadly, I'm going to divide this session into two parts. First, initially start off with some brief details about what is the kind of reforms that have taken place in India with regard to assessment, both in school and as well as higher education, and what were the issues that and challenges that we have faced and also currently that we are facing. And then I'll come lastly, of course, I won't speak much about the PARAK because we've just initiated PARAK and it's still not completely into implementation. So we'll go about, okay. Now coming up to this particular slide, as you know that just a day before the exam or on the day of the exam, all of you are aware that children are generally, look out for support systems, mechanisms to get some kind of a moral support or some kind of a hope or looking out for a lucky charm
before examination. I mean, this I'm sure all of us also would have experienced when we were in school, or even now. Most of you are parents, I'm sure, and you also know that children do this. They tag on to someone, maybe an icon or a lucky charm, to see that they perform well in the examination. Why is this panic about examinations? Why can't we normally go to examinations as we go normally to schools? This is the whole question. Why does always exam create some kind of insecurity among children? And there's always fear that whether you would perform well or not. I mean, this is a question I think we've always faced, and it's always been going through years and years and years. And I think that is one of the reasons we've realized that exam. Why can't we have fearless examinations? Why should there be some kind of? There's always a component of fear, and it varies in degrees depending on the nature of a child, or also depending on the personality of a child, or also depends on the curriculum. It depends on the schooling system. So these are the issues I think which we will try to highlight in this particular session. Coming up to introduction, reforms. If you generally see, reforms in India have always been a subject of serious discourse. Anytime there's a reform in education, there's always this whole question of examination. How do we reform the examination system, or how do we reform the assessment system? There are debates, then there are the pros and cons, serious debates, and every year, I mean, every time we come out with a reform, there is this whole question of how do we improve our examination systems, or how do we improve our assessment procedures in schools, both as well as in the higher education system. Why do we need to reform the assessment procedures? That is the whole question. Like, I mean, if you look into it, right from pre-independence time, we have focused on examination reforms. And every time we come out, we feel that there is a need to revise as time changes, as we advance, as society becomes more advanced, industrialized, more developed. There is always this need to reform the assessment. If you also look into maybe most of you said, the time you had gone to school and now the children going to school, you can see that the orientation and perspectives have undergone a tremendous change in terms of assessment procedures. We have changed, I'm sure, because I think you can also, most of you know that the tuitions in our days was never for an elementary child. We hardly used to go to tuitions, but now that tuitions, parents enroll children for tuitions right from preschool. No, why is the pressure to enroll children for tuitions? Is it to perform well? Why was this pressure not there in the earlier times, and why is it now increasing very rapidly in the country and across the world? There's also this whole question of when examinations need to be conducted, maybe once a year, twice a year. Should we have or should we have not? Most of you know that the latest debates also has shown that with the board examinations, they've decided, there was a time when they said, okay, we should not have the board examinations for the 10th standard because they feel that it put lots of stress and pressure on the students. So this whole thing about how often those should be conducted, what approaches could be adopted, are there better approaches for conducting assessment or examinations? If yes, what are the assessment procedures? So there is this whole discourse going on across the country within educational management systems, even between countries, and in India also too. There is a lot of efforts have been taken to change the examination procedure. Sorry, I know I have to speak in Hindi also. थोड़ा मैं हिंदी में भी बात करूंगी. आप सब जानते हो कि जो सुधार हम करना चाहते हो परीक्षाओं में या असेसमेंट में, ये हमेशा बदलते रहे, और इस पर काफी बहस भी हो चुकी है कि परीक्षाएं कब होनी चाहिए, कितने साल में कितने बार होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, रिटर्न में होने चाहिए या ओरल में होने चाहिए. तो ये आप देख सकते हैं प्राचीन काल से, मतलब भारत के स्वतंत्र के पहले से भी आप अगर आप देखेंगे रिपोर्ट्स में, उस वक्त भी एग्जामिनेशन के बारे में काफी चर्चा हुई है और अभी भी हो रही है. मतलब हर टाइम में जब वो वक्त आता है कि जब हमको नया
कोई रिफॉर्म लाना है या सुधार लाने हैं अपने शिक्षा अपने एजुकेशनल सिस्टम में, तो एग्जामिनेशन के बारे में हमेशा एक काफी चर्चा होती है। तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो रिफॉर्म्स, ये सुधार हम की बात कर रहे हैं, तो ये सुधार कहाँ दिखते हैं आपको? वेयर डू यू सी दिस रिफॉर्म्स? अगर आप देखो तो ये रिपोर्ट्स में भी दिख सकते हैं, नेशनल रिपोर्ट्स में, अनेक नेशनल रिपोर्ट्स ने इस बारे में इसका उल्लेख किया है। कमीशंस भी है, जो नेशनल कमीशंस that have come up right before independence, pre-colonial and also now post-colonial after independence also. एजुकेशन पॉलिसीज में भी आप देख सकते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स में भी देख सकते हैं आप जानते हैं कि अभी का द लेटेस्ट पॉलिसी, द नेशनल पॉलिसीज 2020, इसके पहले एंड आल्सो नाउ यू नो दैट हम अभी एक नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के प्रोसेस में भी अभी हो रहा है। आई थिंक एक साल में या 2 साल में वो भी सामने आएगा। उसके पहले भी टेस्टिंग, आप ये भी जानते हो कि इंडिया में, भारत में टेस्टिंग काफी सालों से, जैसे नेशनल अचीवमेंट सर्वेज जो होता है एनसीईआरटी कंडक्ट करता है जो पूरे भारत में, ये 2001 से शुरू हुआ है एंड दिस इज कंडक्टेड एवरी 3 years। हर 3 साल में इसको रिपीट किया जाता है, जहां पर वो लोग सैंपल स्कूल्स या स्टूडेंट्स को लेके उनका असेसमेंट स्टूडेंट्स का करते हैं। तो एसर का भी है, जो ऑफकोर्स इट इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बट असर का रिजल्ट्स हैव ऑलवेज ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द नेशन। अशर भी काफी सालों से जब भी वो कंडक्ट करते तो काफी लोगों का ध्यान वो भी बढ़ा देता है कि अगर इम्प्रूव करना है तो किस एरिया में इम्प्रूव करना है, कहाँ पर हमारे गैप्स हैं। असर, प्रथम असर तो आप जानते हैं। तो अल्टीमेटली वो भी देख सकते हैं कि रिफॉर्म्स हमने काफी स्कोरिंग में भी किया। अल्टीमेट असेसमेंट करना है तो स्कोरिंग करना है या ग्रेडिंग शुड वी डू, या कुमुलेटिव फॉर्म्स में भी कर सकते हैं, जैसे हम परसेंटाइल्स की बात करते हैं या ग्रेड पॉइंट्स की बात करते हैं। And some of the lot of agencies also been established, like something like CAPE, then there is CBSE and Parak, of course, is the latest। सबसे अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो निकाला है, उन्होंने परख भी एक प्लेटफॉर्म निकाला है which is completely dedicated to assessment। Okay, bringing reforms, अगर कैसे सुधार लाए जाते हैं जनरली, अगर भारत में अगर रिफॉर्म लाना है तो what is the procedure? Actually, if you see that जो भी कमिटी फॉर्म हुआ या whatever the committees or commissions that have been formed, before coming out with a report, there is always a review is being done of the prevailing situation। उस वक्त भी क्या परिस्थिति है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की, बच्चों की क्या परिस्थिति है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो इन बातों को ध्यान रखते हुए, इन मुद्दों को रखते हुए, generally reports and reforms and commissions are prepared and placed across the nation towards the public, in the public domain। बट इस वक्त जब जैसे रिफॉर्म्स में भी देखते हो, जगह जैसे इफ यू वांट टू सी स्पेशली फॉर हायर एजुकेशन, ये भी पता चला है कि अगर हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाना है तो you have to also bring in changes in the secondary education, because higher education is dependent on the performance of secondary education। तो इसीलिए आप देखो, अगर हायर एजुकेशन के जो कमीशंस एंड कमिटीज हुए, in order to estimate the impact on higher education, they had to also review the secondary education। मुझे उनको सेकेंडरी एजुकेशन का स्टेटस का भी अभ्यास करना पड़ता था अगर उनको हायर एजुकेशन के implications लाना होता। तो if you want to make reforms in higher education, you also have to make changes in the secondary education। मतलब ये independently नहीं हो सकता है, that is also they have realized, and I've seen that in most of the committees reports। अच्छा, कौन से committees and commissions? अनेक committees and commissions have come so far। Okay, आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पेज पर काफी कुछ अपने स्वतंत्र के पहले की भी है और कुछ स्वतंत्र के बाद भी है, और यू कैन सी देम, एंड काफी सारे हैं, लेकिन आई हैव ओनली पिक्ड अप अ फ्यू वन वेयर मोर ऑफ हाइलाइट्स हैज बीन गिवन टू असेसमेंट। मतलब जिन मैंने सिर्फ उन्हीं कमिटीज और कमीशंस को लिया जिन्होंने ज्यादा उन्होंने एग्जामिनेशन और असेसमेंट रिफॉर्म्स पर ध्यान दिया है, या उन्होंने उनके बारे में ज्यादा लिखा गया है, रिकमेंडेशंस बनाए थे। जैसे सैडलर कमीशन, हैटॉ कमीशन, ऑफ कोर्स की बात मैं ज्यादा नहीं करूंगी, या राधाकृष्णन कमिटी इज आल्सो नोन एज यूजीसी कमीशन,
मुदलियार कमीशन उसको भी सेकेंडरी कमीशन की बात करते ज्यादा. कोठारी कमीशन जनरली it speaks for the whole complete education system, मतलब पूरे right from primary to higher education तक बात करती है. And of course national policy of education आप काफी लोग जानते होंगे, और plan of action के बारे में, और national curriculum 2005. I know that मतलब आप सबने भी उस पर सहभाग हुए होंगे जब national curriculum framework 2005 was brought into the country, and the amount of exercise लिया गया था कि teachers and schools are oriented to NCF 2005, and of course now is the latest education policy 2020. Now up to 2020 आप जानते हो went through a very rigorous process. मैं उसके बारे में थोड़ी देर बाद में बताऊंगी. तो I'll speak more about national detail in national education policy just after I complete on the reforms. Coming up to Sadler Commission, which is in 1970. Us commission, if you look into, this commission actually made a very critical and comprehensive survey of educational problems of secondary, collegiate and university education. तो आप देखा जाए तो Sadler Commission ने सब stages of education के बारे में थोड़ा अभ्यास किया है, and critical थोड़ा किया. Critical मतलब सिर्फ positive है, negative aspects भी किया है in educational status पर, उस पर ध्यान दिया गया था. उन्होंने रेकमेंड किया था कि डिवाइडिंग द लाइन बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड सेकेंडरी. उनको ये कहना था कि सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बीच में एक लाइन ड्रॉ होना चाहिए था एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन रादर देन मेट्रो. मतलब 10th के बाद नहीं, 12th के बाद a child is eligible to get into university. So this was something which was being brought up by the Sadler Unity Commission. So इनका मतलब है कि तो अगर उसके बाद 12th के बाद आप can get into the whole platform of a higher education, and that is into a university. तो तभी तो intermediate colleges also have been established in this regard, which were in arts, science and engineering, industrial education courses. जैसे आप जानते हैं कि 10वीं के बाद students are permitted to choose their stream of choice. So that is what I mean by intermediate colleges. Intermediate concept of intermediate colleges, जैसे हम महाराष्ट्र में हम उसको junior colleges कहते हैं, is not there in all the states. I believe only few states में इसका इस मॉडल को implement किया गया है. कुछ states कहाँ पर भी सिर्फ 12th तक स्कूल ही कहते हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आप जानते हैं स्कूल भी है और जूनियर कॉलेजेस भी है या इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं, which basically helps for an easy transfer for a child to transfer from school to a university campus. So this is something about the highlight of a Sadler University commission. Coming to the next commission, अगर आप देखो, so it's a Mudaliar commission. It is also known as the secondary commission. और इसके in 1951 में actually the CAPE, जो इसकी बात मैंने वहाँ पर, is one of the agencies also which has been monitoring. CAPE का actually role क्या था उस वक्त, monitor the complete education system को करना चाहिए था. Apart from that, उनमें assessment भी there was a part which is was looking into. So the CAPE had advised the central government to appoint a secondary education commission, and under the chairmanship of Dr. Lakshmana Swami Mudaliar, the then Vice Chancellor of Madras University, this commission was formed. So he led the commission, and especially to look into the secondary education system in the country. That was in just after the independence, मतलब जब भारत को स्वतंत्र उसी वक्त, उसी 1-2 साल के बाद इस कमीशन को बिठाया गया था. एंड इन्होंने ज्यादातर उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पर ध्यान दिया, देखा कि बच्चों को, सेकेंडरी स्कूल बच्चों को अगर यूनिवर्सिटी में अगर उनको एंट्री करना है, हाउ डू वी शिफ्ट देम टू द यूनिवर्सिटी एजुकेशन. तो इसी बात पर ये कमीशन बिठाया गया था. तो उन्होंने उस रिपोर्ट में, कमीशन रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो स्थिति थी एजुकेशन की उस वक्त, कि हम वी वर नॉट एबल टू डेवलप qualities like cooperation, discipline and leadership. So this was something they found as a gap area during that time in the educational system in the country. दूसरी बात they said that why are we not focusing on the development of democratic leadership, vocational skills, personality and leadership qualities. So this was a recommendation actually made by the Mudaliar Commission. उन्होंने ये भी बताया कि apart from अगर आप उनका कहना है कि अगर हम
उनका कहना है कि हमने ये जो क्वालिटीज है इस पर ध्यान क्यों नहीं देते, इस पर देना चाहिए, जैसे डेमोक्रेटिक लीडरशिप, वोकेशनल स्किल्स, पर्सनालिटी और लीडरशिप क्वालिटीज। और उनका ये भी कहना था कि जो गुण होते हैं जैसे कोऑपरेशन, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप, ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम पर ज्यादा फोकस नहीं दे रहा था उस वक्त। तो उनका ये भी कहना था कि हमें एक्सटर्नल एग्जामिनेशन रिड्यूस करना चाहिए था और सब्जेक्टिविटी कम करना चाहिए था। सब्जेक्टिव में भी इन टर्म्स ऑफ एसेसिंग, क्योंकि जनरली आप जानते हैं अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन देंगे तो उसमें ज्यादा सब्जेक्टिविटी रहता है। तो एक टीचर, अगर टीचर कहता है कि ये शिक्षक अगर दूसरे शिक्षक से अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको आप जान सकते हैं, या शायद अगर मैं देखती हूँ, मैं कहूंगी नो द नंबर 2 स्टूडेंट इज बेटर देन द नंबर 1। तो वहां पर सब्जेक्टिविटी आता है स्पेशली ऐसे टाइप क्वेश्चंस में। तो उनका वो कहना था किस तरह का हम उसको भी कम कर सकते हैं। अगर क्रैमिंग आप सब जानते हैं कि and all of you know that I think it's always there in the examination in India that we have been focusing on rote memory। हम मेमोरी पर बहुत ध्यान देते हैं। अब बच्चों को जैसे डिफाइन करो, गिव द फंक्शंस ऑफ ये, गिव द रोल्स ऑफ दिस, तो हम मेमोरी पर ज्यादा फोर्स करते रहे और अभी भी है, इट इज नॉट दैट इज रिड्यूस, फिलहाल भी इसी पर ज्यादा फोकस हो रहा है। एंड उन्होंने और एक कमीशन ने बोला कि स्कोर नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशंस में, इनका जो रेटिंग होना चाहिए 5 पॉइंट स्केल रेटिंग में। जैसे उन्होंने बोला है कि इस कमीशन हैज सेड दैट ए फॉर डिस्टिंक्शन, बी का क्रेडिट देना चाहिए था, सी फॉर पास, डी एंड ई इज एदर फॉर फेल और री एग्जाम। मुदलिया कमिश्नर में ये और एक नई बात उन्होंने लाया कि दैट यू हैव टू परमिट स्टूडेंट्स टू गिव कंपार्टमेंटल एग्जाम्स, दैट इज give a re-exam if they fail or if they want to reappear or improve their marks। तो मुदलियार कमीशन ने जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो कंपार्टमेंटल एग्जाम की कंसेप्ट का जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उस वक्त। तो मतलब बच्चों अगर कम मार्क्स मिले या अगर फेल मेरे तो कंपार्टमेंट एग्जाम दोबारा 4-5, आप जानते हैं 4-5 महीने के बाद तब बच्चा कैन रीअपियर फॉर द एग्जाम। तो ये था मुदलियार कमीशन का। The next commission was the Radhakrishnan Commission, which is also known as the University Commission। इसको भी किया था। तो ये जो commission है, this commission largely focused on the higher education and especially the examination reforms in higher education। And this particular examination, आप थोड़ा contradictions भी देख सकते हैं एक reforms to unreform। like एक reform ने कहा कि आपको सब्जेक्टिविटी कम करना चाहिए क्योंकि ऐसे फॉर्म्स में, तो इसलिए ऐसे एग्जाम्स कम होना चाहिए। लेकिन यस, और ऑफ कोर्स, लेकिन राधाकृष्णन ने भी बोला है कि कमीशन ने बोला है कि ऐसे टाइप्स क्वेश्चंस को भी सप्लीमेंटेड बाय ऑब्जेक्टिव टाइप एंड ओरल टेस्ट्स। अगर आप इस कमीशन का रिपोर्ट देखेंगे तो इन्होंने काफी विस्तार से लिखा है कि ऑब्जेक्टिव्स करेंगे तो कैसे होने चाहिए, किस तरह कैसे रिलायबल वैलिड होना चाहिए वे, तो उन्होंने और लेस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो दिस इज द काइंड ऑफ अ थिंग दे हैव इंसिस्टेड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड ओरल टेस्ट। दे आल्सो एट अ वेरी स्ट्रक्चरल लेवल, राधाकृष्णन कमीशन ने भी ये भी रेकमेंड किया कि फुल टाइम बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस होने चाहिए हर यूनिवर्सिटी में। देयर शुड बी फुल टाइम बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस in each university। but is something you should know about the Radhakrishnan Commission report। उन्होंने साफ लिखा है, we are convinced that if we are to suggest one single reform in university education, it should be that of the examinations। I think this is a real, I think we should really take it in red that even the UGC Commission report, earlier one, had also emphasized about reforms in education, and that should be the most priority reform that the country had to take during that particular time। Okay, and what else? Yes. Okay. Now, William, coming up to the next, why reforms in education? Why is this whole hue and cry about reform in education? What is this exam? What happens in examination? आप इस चित्र में देख सकते हो, there is a tick tock, मतलब there's always a रेस विद टाइम होता है। हमेशा बच्चे लिखते हैं तो पहले घड़ी में देखते हो कि अभी कितना टाइम बचा हुआ है, एंड यू नो दैट
पैनिक का रेट जैसे टाइम कम होता जाता है तो पैनिक रेट इंक्रीज हो जाता है. देयर इज दिस होल माइंड ब्लॉक. अगर पढ़ के आते हैं तो वहां क्वेश्चन पेपर देख के पूरा ब्लॉक हो जाता है. When they are not able to recall what they have read, they are not able to relate even what they're supposed to write. So this is whole mind block taking place. The pen stop. आप I'm sure most of you have experience with your children. मतलब आप जानते होंगे आपके बच्चे भी वो उंगलियां लिखने नहीं जाती है. They almost get frozen fingers. वो भी हो जाता है बच्चों को एग्जामिनेशन के. आइस पॉप मतलब आइस पॉप कब होता है जब you are like shocked to see many questions you can't answer, तो वो हो जाता है. And full shock भी हो जाता है when you find the paper very tough or jaw drop. मतलब ये सब these are expressions of children, especially when they see the question paper or the examination paper in an examination hall, and there's a time up when you know that बच्चे जानते हैं कि अगर मैं और लिखना चाहती हूँ लेकिन टाइम खत्म हो चुका है. There is this kind of a distress, dissatisfaction sometimes when examination, when you're not able to complete. जब बच्चे अपने पूरी तरह से या सहमत नहीं कि उन्होंने अपने मतलब पूरा दे सकते हैं, they couldn't give justice while writing that paper, and especially no luck. बच्चे ये भी जानते हैं कि कभी-कभी luck doesn't play in examinations. And of course आप जानते हैं बच्चे अभी भी करते हैं, पहले भी they'll wear their lucky watch या they wear a lucky shirt. तो ये वो सब ख्याल, I mean these are the things that children tag on when it's got to do with examination. I think this is something we really seriously need to think. क्यों ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्यों उनको वो उस काइंड ऑफ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. व्हाई डू वी गेट अनसाइंटिफिक व्हेन देयर इज एग्जामिनेशन. मतलब बच्चे क्यों अनसाइंटिफिक हो जाता है. फिलहाल हम भी मतलब आप अभी भी आई नो व्हेन वी गो फॉर इंटरव्यूज some people do have some kind of vague ideas कि ठीक है ये मेरा लकी चार्म है तो इसको लेके दो. तो इस वक्त हम अनसाइंटिफिक क्यों हो. इट्स बेसिकली सम काइंड ऑफ अनसाइंटिफिकनेस. जो पहला स्लाइड मैंने दिखाया तो बच्चा भगवान को प्रे करता है ना, बच्चे मंदिर जाते हैं, एंड keeping faith is very good, of course it's good, but why does it increase only when you it's in a time of a need or something like during an examination. I think this is something as teachers, as administrators, as educationists, हम सबको इस पर विचार करना चाहिए. एग्जामिनेशंस पर ऐसा दबाव क्यों लगाते हैं, सिस्टम्स क्यों देते हैं इतना दबाव बच्चों पर एग्जामिनेशंस के टाइम पर. The next commission आप देखना चाहते हैं इसी कोठारी कमीशन, which is also known as the Education Commission 1964-66. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कोठारी कमीशन का जो the sculpture or you can say the architecture of the कोठारी कमीशन was श्री JP नायक, जो हमारे इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे. He was a founder of Indian Institute of Education, and he was the one also who penned lot of points for the कोठारी कमीशन report. तो काफी आइडिया जो इस रिपोर्ट में डाले गए उन्हीं के थे, विनायक के. What is this commission do? This commission also reviewed of the general and the secondary education in the country. उस वक्त there was a central examination unit, मतलब पहले से ही स्थापित हुआ था भारत में 1958 में. बट इन्होंने कोठारी कमीशन ने उसको और डिसेंट्रलाइज किया. उन्होंने बोला कि नहीं, एक स्टेट इवैल्यूएशन यूनिट्स भी होने चाहिए. हर राज्य में एक स्टेट इवैल्यूएशन यूनिट्स होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन यूनिट. सो देयर वाज दिस काइंड ऑफ, आप थोड़ा दे सकते थे कि थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ. हम सेंट्रलाइज वी ट्राइंग टू गेट डिसेंट्रलाइज का भी एग्जामिनेशंस में हुआ है. एंड उन्होंने ये भी बोला कि ऑफ कोर्स ये जो वैलिड, उन्होंने बोला कि द न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड टेक्निक शुड बी वैलिड, रिलायबल, ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल. ये सिर्फ इस कमीशन ने भी नहीं बताया, इसके पहले में कमीशंस ने भी काफी बोला है इसके बारे में. तभी तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बारे का भी उल्लेख किया था. पर इन्होंने ये भी बोला कि अगर बच्चों का ग्रोथ हमको असेस करना है, ये रिटन एग्जामिनेशन से नहीं हो सकता है. लाइक सेवरल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ कैन नॉट बी मेजर्ड थ्रू रिटन एग्जामिनेशंस ओनली. उनका ये कहना है कि ये ऑब्जर्वेशंस, ओरल टेस्ट एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस थ्रू भी होना चाहिए. एंड दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन. हिंदी में ऑब्जर्वेशंस में मैं नहीं जा कह सकती हूँ, लेकिन ओरल टेस्ट और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के थ्रू भी होना चाहिए इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस.
एक्चुअली अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे, इन्होंने डिटेल में दिया गया है कि लोअर प्राइमरी स्टेज, हायर प्राइमरी स्टेज और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कैसे होने चाहिए, इवैल्यूएशंस, मतलब इट्स अ ह्यूज रिपोर्ट एक्चुअली, इट्स ऑफ 2 वॉल्यूम्स. In this particular you can see on the, and it also speaks in detail about external examination कैसे होने चाहिए, you know, and it also speaks about common internal exam. ये कॉमन इंटरनल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, उनका कहना है कि अगर हम क्यों कॉमन इंटरनल एग्जामिनेशन होना चाहिए, कॉमन मतलब उनका कहना है कि हमको स्कूल्स को, बच्चों को एक और दूसरे स्कूल को कंपेयर होना चाहिए. So we should be able to compare children from one school to another. That's an inter-school comparability. And so they insisted that you should have a common internal examination. And also they were saying about improving the external examinations. There was something, a huge concern this report actually gave was large failures in the board examinations. उस वक्त जब बोर्ड एग्जामिनेशंस हो रहे थे भारत में, तब उनको पता चला, आई मीन दे रियलाइज, उन्होंने दिखा गया कि ऑलमोस्ट 50% के अबाउ, ऑलमोस्ट 50% बच्चे फेल होते थे बोर्ड एग्जामिनेशंस में. दैट काफी चिंता की बात थी उस वक्त कि बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं. एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेती हूँ. So that was a huge concern. तो ये काफी चिंता की बात कि बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में क्यों फेल हो रहे थे. दिस वाज समथिंग इस कमीशन ने हाईलाइट किया था. और उनका दूसरा एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने जो रेकमेंड किया है कि internal external examinations agar should not be combined and indicated separately in the certificates. So maybe they did not trust the, I don't know what was the exact reason, but I think they felt that internal and external assessment के जो procedures होते हैं, they are not similar, so you have to not combine them, but you must indicate them in separately in certificates. ये फिलहाल ये जो procedure अभी भी I think some universities and colleges are adopting, where you can see an internal mark and an external marks. मतलब this pattern is adopted even today in the country. Coming up to the national education, ये इसके बाद की जो policy which also grabbed the attention of the country was the National Policy of Education 1986. अब सब लोग जानते हैं, काफी पॉपुलर पॉलिसी है, एंड इवन टुडे काफी लोग, आई मीन एज एजुकेशनिस्ट, एज इवन टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स, we go back to this policy and to see what actually has this policy in mind. This policy has been a turning point था इंडिया के लिए भी, because उसके implications इतने निकले थे. So lot of reforms in education, especially in teacher education. आप जानते हैं इस policy के बाद diets were established in the country. District institutes for education and training, but it came out after the plan of action of this policy came out. उनका सबसे पहला चिंतित बात है, they said that elimination of excessive element of chance and subjectivity. They said you have to eliminate in examinations the element of chance. So शायद ये element of chance हो सकता है. This is also quite possible. Objectivity मतलब children should not like guess and give answers. It should be more of like you reason out and then you give an answer. मतलब अगर आप उत्तर देना चाहते हैं, उसका कोई कारण होना चाहिए. आप, तो दैट इज व्हाट उनका, वैसे परीक्षा की बात वो लोग कर रहे थे. और सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे थे कि जितना टीचर्स में सब्जेक्टिविटी का कॉम्पोनेंट कम हो सकते हैं, वैसे एग्जाम्स देने चाहिए थे. दे आल्सो डी एम्फसाइज ऑन मेमोराइजेशन. दैट इज अ रिपीटेड फीचर बाय मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज एंड कमीशन. ये जो बात हुई थी, emphasize was continuous and comprehensive evaluation. This was introduced by the National Policy of Education. आप सब CCE के बारे में सुना होगा. आप लोग जानते हैं कि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इम्प्लीमेंट हुआ, तो CCE also was in a peak पूरे भारत में, एंड वेरिन उन्होंने बोला कि सिर्फ स्कोलास्टिक नहीं, नॉन स्कोलास्टिक एरियाज का भी असेसमेंट होना चाहिए था. इस पर से कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में सीबीएसई ने काफी काम किया हुआ है. अगर आप एनसीईआरटी और सीबीएसई के वेबसाइट में जाओ तो यू कैन सी लॉट ऑफ बुक्स, टीचर मैनुअल्स प्रिपेयर किया गया, हर स्टैंडर्ड के लिए प्रिपेयर किया गया था सीसीई के बुकलेट्स. और उन्हें इंटेंसिव वर्क वाज डन ड्यूरिंग दैट टाइम. ये कंटिन्यूस एंड मतलब ये आई थिंक सम टाइम इन अराउंड 2009. उस वक्त द पॉलिसी आल्सो told about minimum level of learning.
अगर I think some of the senior professors or the senior staff faculty, I'm not sure whether आपको पता है कि मिनिमम लेवल्स की बात भी हुई थी, एंड इसका जो कंसेप्ट है वो ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPP, आई थिंक दिस वाज सम टाइम इन 1995 की बात हुई थी, यस। उस टाइम पर मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग कंसेप्ट का काफी उपयोग किया गया था। दैट इज, उनका कहना है कि अगर there are 5 kind of an outcomes, 5 levels of outcomes you want in a child. For instance, मैं जो उदाहरण दे रही हूँ, तो एटलीस्ट मिनिमम लेवल बच्चों को एटलीस्ट 2 लेवल्स क्लियर होना चाहिए 5 में से। सो दैट वाज इट। तो उन्होंने वो बेंचमार्क डाल के रखा हुआ था, सो एवरी चाइल्ड। एंड उसी वक्त उन्होंने वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन भी यहाँ से शुरू हुई थी, बिकॉज मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग वेर ऑल दे वर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज। एटलीस्ट उसमें से ठीक है, अगर बच्चे को मैथ्स पता होना चाहिए तो सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है या कैरी ओवर है, तो उसका ग्रेडेशन करते कि एटलीस्ट इतना तक उनको गणित आना चाहिए। तो दैट इज व्हाट दे मेंट बाय मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। और दे आल्सो इंट्रोड्यूस द सेमेस्टर सिस्टम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, वो भी इन्होंने शायद इनिशिएट किया, बट मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन आई हैव नॉट सीन इट विगरसली बीइंग डन इन द कंट्री एट अ सेकेंडरी स्टेज। बट वे सेमेस्टर सिस्टम ऑफ कोर्स स्टार्टेड ऑफ इन कॉलेजेस एंड हायर एजुकेशन में काफी इंस्टीट्यूशंस ने इसको अडॉप्ट किया है। एंड इन्होंने एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ विद ग्रेड्स। उस वक्त से उन्होंने बोला कि मार्क्स का उपयोग नहीं होना चाहिए, ग्रेड्स का ज्यादातर उपयोग होना चाहिए। एंड इफ यू आल्सो नो दैट जब हम स्कूल में थे तो ऑफ कोर्स तब मार्क्स ही थे, ग्रेड्स नहीं थे। एंड ये आई थिंक NP 1986 और 1992 के बाद से थोड़ा ग्रेड्स का ज्यादा उपयोग शुरू होने लगा स्कूलों में। एंड आप ये भी जानते हैं कि हायर एजुकेशन में भी नाउ दे यूज द ग्रेड पॉइंट्स, एंड that is something which has been adopted in the universities also. The national education policy also said about establishing a national examination framework, if you know it, a set of guidelines to examining bodies which would have the freedom to innovate, adopt, and framework to suit the specific situation. This is about the NP. Coming up to plan of action. At school, if you see, that is even the complete decentralization of the education structure. If you took C place, decentralization मतलब हम सेंट्रल से थोड़ा लोकलाइज अप्रोच शुरू किया। कब से? प्लान ऑफ एक्शन जो NP के आधार से हुआ था, तो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर शुरू हुआ था। जहाँ पे स्कूल कॉम्प्लेक्स शुरू हुए थे, फिर देयर वाज दिस SMCs हुए थे, दे बिकेम मोर एग्रेसिव। तो उनकी जो लॉजिस्टिक्स स्टार्टेड गेटिंग मोर क्लियर की decentralization started taking place at the school level. At the university also, they said that student performance should be through grades, overall performance through cumulative grade point. Cumulative आप जानते हो, cumulative like percentiles, जैसे GRE में use करते हैं कि what is your percentile rank. Sorry, it only tells how many children are below you, so that it doesn't say what kind of rank. And उन्होंने question banks की भी बात की, they said that you have to have question banks. And they brought an innovative idea, plan of action, and it was open book examination. जो फिलहाल I'm sure some of you also, ये जो अभी the pandemic के टाइम में जब आपको पता चला कि बच्चों घर में है, so I'm sure most of the universities and college अगर आप formative assessment कर रहे, I mean some of you have adopted the open book examinations, and they've also emphasized on diagnostic evaluation. The plan of action also said about setting up a national testing service, especially to have quality control, to ensure comparability between regions and between schools and independent tests. And also it says about setting up a national examination framework with representative from UGC, NCERT, AICTE, and the state level organizations, including the Board of Secondary Education. So these are some of the highlights of the Plan of Education Action 1992. Coming to 19, the National Curriculum Framework 2005. आप सब जानते हो, it was a very popular curriculum framework, and it was like a movement in the country जहाँ पर हर states में workshops किए गए थे, teachers coordinate कर रहे थे, there were training programs, there were lectures, there were seminars, तो काफी cascade level trainings भी चल रहे थे, where you have these animators and subject experts. The NCF basically NCF, what was the main issue of NCF? I mean what did they highlight most? They said that the assessment should be a way of providing credible feedback on the extent to which we have been successful in preparing citizens for a meaningful and productive life. So उनका कहना था
कि असेसमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वी हैव टू सी दैट कि बच्चों जो है they are citizens of for a meaningful and productive life. मतलब ultimately they are able to lead a good life. So that is what we mean to say, are they capable of leading a good life? That should be the purpose of the assessment. And उन्होंने भी competency based assessment को recommend किया था. And उनका ये भी बहुत कहना था कि all the areas cannot be marked. मतलब जो curriculum में जब स्कूल में हम जो subjects पढ़ाते हैं, all the subjects cannot be marked. There are some subjects which can be only assessed through observation. जैसे तुम्हारा आर्ट्स होगा या म्यूजिक होगा, स्पोर्ट्स होगा, समथिंग इन लैब वर्क, तो उनको कहना है कि उनको मार्क्स नहीं देने चाहिए. So they said that you have to, and also they also emphasized again like the Kothari Commission, उन्होंने भी devise a good and effective open book examination की बात. तो आप देख सकते हैं कि how we have moved from written examinations to objective types to open book examination. So you can see how our perspectives have changed. हमारे विचार कैसे बदलते रहे पहले से, और धीरे धीरे हम थोड़ा और कैसे एग्जामिनेशन को कैसे फ्लेक्सिबल कर सकते उसकी ओर बढ़ रहे थे एज अ कंट्री ऑल्सो थ्रू. एंड ऑल्सो द एनसीएफ ऑल्सो was very concerned about the negative effects of competition. I think NCF ने शायद काफी उन्होंने कंपटीशन के बारे में क्या कहा, उनको पता चला कि आई थिंक एग्जामिनेशंस अल्टीमेटली आर लीडिंग टू अ वेरी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर. वो एक्चुअली वो अच्छी बात नहीं है, कंपटीशन कम होना चाहिए. एंड in fact they were saying, why are we not enabling children to self assess themselves? हम क्यों बच्चों को वो जो एबिलिटी क्यों ने डेवलप कर सकते जहां पर वे खुद को एसेस कर सकते, सेल्फ एसेस कर सकते. एंड उन्होंने इस बात पर भी कहा कि टीचर्स को भी फीडबैक देना चाहिए स्टूडेंट्स को कि where do they lag, what are the liabilities and assets of a child. So उसके बाद पर उन्होंने emphasize. So this is something about NCF, I think, which I think most of you, I'm sure some of you or most of you would also know, but I just thought it would be a right time to highlight, relook at it. Coming जब हम continuous and comprehensive evaluation की बात कर रहे तो now I'll quickly go. उनको कहना है कि only intellectual abilities जैसे knowledge and understanding should not be assessed. हम physical and emotional aspects को भी assess करने चाहिए बच्चों को. So that is the reason they said that. and ऊपर से understanding तक नहीं जाना, application पर भी focus होना चाहिए, जैसे creativity and sensitivity. Sensitivity मतलब in terms of environmental sensitivity. So that was a pollution sensitivity. These are the things. And that is the reason they said that we need to evaluate in the co-scholastic areas, that is the non-academic areas. तो उन्होंने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की भी बात की, जहाँ की पता चले कि जब फंक्शंस एंड मैथ्स में बच्चों को वेयर इज अ actual problem, does it come in carry over, or is it come in subtracting or addition? That is a diagnostic evaluation. And focus also should be laid on the personality development. So this is a small chart you can see about this ये जो co-scholastic areas जो उस टाइम उन्होंने जब CC was in popular in the country, so these were the areas. and ये CBSE के बुक्स में, and in fact महाराष्ट्र के भी बुक्स में भी आपको ये मिल जाएगी areas non-scholastic. Coming up to challenges, ultimately अगर non-scholastic areas assess करना है तो what is the problem? Because आप लोग जानते हैं कि classroom sizes कभी-कभी goes up to 70. So it's difficult, and individual observation was not possible if you want to do co-scholastic assessment. आप जानते हैं co-scholastic में उन्होंने observations का भी tool बोला है use करने के. And we have also not trained teachers to on use these kinds of tools of measurement. And it was also time to realize that it was time consuming for teachers, and we did not have resources because काफी projects बताए गए थे उस वक्त. That is the reason आप जानते हैं कि CC failed in the country. Thus continuous and comprehensive evaluation was not very successful because एक तो सबसे पहले बहुत मिसकंसेप्शन हुआ कि पेरेंट्स को लगा कि असेसमेंट ही नहीं होता यहाँ पर, या सिर्फ प्रोजेक्ट्स करते हैं असेसमेंट. तो वो डर गए कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पता नहीं चलता है CCO से. ये थोड़ा फॉर टीचर्स में भी कुछ मिसकंसेप्शन बिकॉज they didn't understand what is the underlying theoretical premise of continuous and comprehensive evaluation. Actually, a main thing was to reduce stress among children was one of the objectives of CC. And also one was also to assess the progressive learning growth of a child. I think काफी
theoretical and philosophical implications of CC was not understood well by teachers. I think that is attributed to inadequate training. शायद trainings कम पड़ा उस वक्त and orientation programs भी कम पड़े, इसीलिए teachers were not unaware and vigorous in-service teacher education programs did not take place as expected. And आप जानते हैं the Right to Education Act 2009 उन्होंने भी हाईलाइट किया था कि there is a need for meaningful assessment. उन्होंने भी CC पर काफी उल्लेख किया था. एंड उन्होंने द राइट टू एजुकेशन एक्ट, आप सब लोग जानते हैं कि नॉन डिटेंशन पॉलिसी लाया गया था विच वाज इन फोर्स, जहां कहा गया कि 1 to 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को हम डिटेन कर नहीं सकते. आप जानते हैं इस पॉलिसी, इस डिसीजन पर काफी डिबेट हुआ भारत में, काफी चर्चा हुआ. देयर वाज बीन लॉट ऑफ क्रिटिकल कमेंट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉलिसी बिकॉज the teachers felt that the students were not prepared when they came up to the 9th standard. जब बच्चा 9वीं जाता है उनका कहना है कि उसमें उतनी जो क्षमता रहती है वो तैयार नहीं होती है थ्रू अ नॉन डिटेंशन पॉलिसी. आई थिंक शायद टीचर्स और हम सब, आई थिंक इवन पेरेंट्स आल्सो, हम लोग ये नहीं जानते जब बच्चा फील होता है उसके दिमाग में क्या बीतती होगी. एंड दिस इज समथिंग वी फेल टू अंडरस्टैंड. तो उस पॉलिसी का भी वही हम कहना चाहते हैं कि उस पॉलिसी का भी कुछ थियोरेटिकल प्रीमाइस था. I think that we failed to it. So इसीलिए I know, but because of that partial approval to this policy 2019 में हमने दोबारा उस RT Act को हमने amend किया. तो उन्होंने बोला कि जिस states को करना है they can impose the policy. तभी आप देख सकते हैं फिलहाल सब states में ये policy को implement नहीं किया है, कुछ states में उस policy को implement कर रहे हैं. So I think this is a kind of, I think there is some kind of disagreement even today on this particular policy. The exam stress, why does exam stress take a toll on students' life? I am sure all of you are aware that exams ke pehle and exam results jab nikalte hai, what is the kind of toll does it have on children's life? This is, I many times hamesha when the कहते कि board exams के result निकलने वाले आज है कल, मेरा सबसे पहला fear रहता है कि कितने बच्चे निराश होंगे उस result से. एंड उसके इम्पैक्ट्स आप सब लोग जानते हैं. द ओनली प्रॉब्लम इज अनफॉर्चुनेटली कि हम ये जो प्रॉब्लम्स या जो इम्पैक्ट होता है हम भूल जाते हैं व्हेन अगेन द न्यू ईयर स्टार्ट्स और द नेक्स्ट क्लास गोज टू द बोर्ड एग्जाम. आप जानते हैं, आप हमेशा न्यूज में देख सकते हैं कि देयर इज ऑलवेज सुसाइड्स बाय चिल्ड्रन यंग पीपल इन एग्जाम. हमेशा देयर इज ऑलवेज द न्यूज़पेपर इज फ्लडेड विद सच काइंड ऑफ रिपोर्ट्स. तो इसलिए हमेशा मैं कहती जब हम रिफॉर्म्स करते हैं तो हम इस बात पर, इस मुद्दे पर क्यों ध्यान में रख के हम रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये हर साल होता है. ऐसा कभी नहीं होता है कि यू डोंट हैव सुसाइड टेक प्लेस एवरी ईयर आफ्टर द एग्जाम्स एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. एंड शायद आई डोंट नो, मुझे कभी कभी लगता है भारत में शायद ज्यादा होता है क्योंकि भारत में पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं, स्कूल्स कॉम्पिटिशन्स बहुत होते हैं, बच्चों में भी कॉम्पिटिशन्स बहुत होते हैं कि ultimately they lose sense of their whole well-being. And this is actually an article which came out in Times of India 12th March 2018 में, जहाँ पर उन्होंने बोला है हमारा में, आई थिंक इंडियंस में भी है, दैट प्रेशर ऑफ परफेक्शन बहुत होता है. पेरेंट्स में तो बहुत होता है, बच्चों में भी हो सकता है. हम एक्सपेक्टेशंस काफी होता है. आई डोंट नो वेदर as a parent should we have this whole pressure of perfection from a child. अगर 60 मिला तो 70 क्यों नहीं मिला, अगर 70 मिला तो 80 क्यों नहीं मिला. This is the kind of pressure we have been constantly putting. Even schools में आप देख सकते हो रैंकिंग का प्रेशर होता है कि कितने बच्चों ने डिस्टिंक्शन किए हैं. There is this whole competition of which school stands first and which student stands rank. So I think इस मुद्दे पर we really now take it very seriously. हम काफी गंभीरता से इस इश्यू को एक्चुअली हमको लेना चाहिए अगर हम बच्चों की भलाई के बारे में सोचना चाहते हैं तो. तो एसएस रिफॉर्मेंट्स, अच्छा ये रिसेंटली ये बात है कि यूजीसी ने 2019 में उन्होंने एक असेसमेंट रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन के बात किया था. तो उन्होंने इवैल्यूएशन सिस्टम हायर एजुकेशन पर, और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया. आप इसको ऑनलाइन मींस यू कैन गेट इट ऑनलाइन. थोड़ा आगे जाके मैं आपको रिसोर्स दिखाऊंगी, व्हाट इज द नेम, सो यू कैन हैव एक्सेस टू. तो उन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशंस प्ले पाइवटल रोल एंड डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ कैरियर चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स
ability to perceive right higher qualification, determine the degree of knowledge. आप थोड़ा देख सकते हैं, NCF में बोला कि हमने they have to be fit to be in the life, लाइफ को कैसे अडाप्ट कर सकते, दैट इज इम्पोर्टेंट ऑफ एग्जामिनेशंस. कभी कभी बट देन कभी कभी लगता है कि कैरियर भी होना चाहिए. ऑफ कोर्स कैरियर आल्सो इज आल्सो अडेप्टेशन टू लाइफ. हायर एजुकेशन इंडिया हैज लार्जली बीन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एंड टेस्ट मेमोरी स्किल्स. आप अगर आप कोठारी कमीशन देखेंगे उस रिपोर्ट में, आई वांट टू रिकॉल, उसमें लिखा है द इविल्स यू शुड बी अवेयर. आई मीन it's very clearly written in the report, the evils of examination, you're aware of it. I was like shocked to see that a Kothari commission wrote something, evils of examination. I think this is something I think we really need to take it to heart and see how can we reduce the evil element in examinations. They are largely conducted at the end of every semester and every year. Ab sab log jante hain, higher education and children are generally very relaxed the whole through year, and jab examination ka time aata, then they all sit together and start studying, and there's a whole pressure of studying. ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ साल के आखिरी में क्यों पढ़ाई होती है, पूरे साल में क्यों? I think that is the reason I think स्कूलों में continuous and comprehensive evaluation assessment किया था. I think that is why we failed, कि हमको साल के एंड में नहीं होना चाहिए, बीच बीच में भी होना है, ताकि वो प्रेशर और लोड भी कम हो जाता है बच्चों का. And little focus on continuous, yes, it's the same thing. The report also says that very little focus on continuous assessment during teaching learning process. So this is the UGC report which also says, it also says that we are also insensitive cramming भी हो जाता है. ये सिर्फ स्कूलों में भी नहीं, हायर एजुकेशन में भी होता है, बस superficial discrete information पर होता है learning. And also it insulates students from quests of knowledge, excitement and discovery. आप जानते हो what is, I mean, the purpose of universities anywhere and the whole concept of university is to nurture the child, to become creators of knowledge and contribute to research. That actually is the objective of a university. It is not coming and only learning, but is also exploring knowledge, coming out with new areas of knowledge. That is actually the purpose of university. But I think that is somewhere the university systems have failed. वो quest of knowledge. आप अभी भी था यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन, बच्चे आपके पास आके पूछते हैं कि मैम आप मेरे को रेफरेंसेस दे सकते हो. ये तो यूनिवर्सिटी छोड़ा, हमारे पीएचडी प्रोग्राम्स में भी बच्चे आते. सो आई सेड लाइब्रेरी पूरा पड़ा हुआ है. यू आर सपोज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी, स्कैन थ्रू द बुक्स, look out which is the best book. वहां पर भी you need to have an ability to scan through the books to see which is a valid knowledge. Sorry, ये गलती से हुआ है. Okay, and identify which is a book which is right for you. There is amount of stress and anxiety for students rather than joy of learning, and preparing students to work towards. And ultimately, when university also is getting better marks, it's not like whether you have contributed to a society or whether you have contributed to a field of knowledge. Have you come out with some kind of an innovative idea? I think there are universities also doing, but in general मैं बात कर रही हूँ. And the term and exam is usually based on the question paper, which has only memory, recall as a skill. Why have we not focused on a functional skill? मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ. आप engineers की बात करोगे, all mechanical engineers, I'm sure, will they be able to repair their own vehicles when it breaks down? Are we able to change the fuse in our houses on our own? These are functional skills. ये नहीं हो सकता. क्यों? Why are we failing this? इसके लिए एक छोटा सा I want to show the small, maybe you should see this picture which says, how do you know you can count to 1 million if you have never done it? So this is something like that. I think very important to know, how can you call yourself as an engineer or a mechanical engineer if you're unable to locate the fault in an engine when you're actually using it? It's not only to do with engineers, it could be anything. Even today's education is also, we call ourselves as teachers, as researchers, as educators. फिर भी अगर कुछ बात हुई तो many times we are unable to locate the actual problem in that particular thing. So that's because especially teachers, after you complete the B.Ed program and जब वो school जाते हैं teachers पढ़ाने के, like it's like बच्चे are like shocked. I remember a student मेरे को बोलते, मैम मैं जब मैं गई थी तो स्कूल में chalk piece भी नहीं था. I said, this is a reality of school, but that reality is not being told when you do a B.Ed program. These are some things I think, because you have not visited a corporation school. Maybe if you go to a private school, you will get all facilities. You will not get these facilities in a
government school. So this is something I think is to being functional about how can we make university education more functional is very important today. What are the challenges? Of course, the same report, UGC का report, उनका कहना है कि इसके अलावा assessment काफी systematic challenges है, जैसे tremendous pressure on affiliating universities, large number of examinations पर उनको pool करना पड़ता है, there's huge logistic support, examination को अगर simultaneously conduct करना है तो कैसे, and there is whole thing of logistics, transport, preparation of answer sheets, blueprints, transportation, evaluation centers, keep it sealed, keep it. I think all of you know that how papers get leaked out, कैसे leak हो जाते हैं, integration of marks, malpractice है, malpractice I have not spoken much on malpractices, but अब सब लोग जानते हैं this issue is a very serious issue in our country also. malpractices के बाद कैसे universities में we take all the precautions. I think one of the reasons even to reduce malpractices was open book examination. That is what was also been suggested by some of the policies. So university, why don't we focus on seminars, paper readings, group discussion? This is something I think this report, UGC report, also recommends and assess on application skills or skills of higher ability like analysis, creation, evaluation, etc. जब NCF 2005 में हुआ था, उस टाइम उन्होंने नेशनल फोकस ग्रुप्स भी किए थे उन्होंने. There were small groups done on different aspects of education. तो उसमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए भी उन्होंने एक नेशनल फोकस ग्रुप बनाया था. आई वाज जस्ट लुकिंग थ्रू द रिपोर्ट एंड आई रियली लाइक दैट रिपोर्ट. में भी शायद आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है. दिस हैज बीन पब्लिश्ड बाय द एनसीईआरटी. यू शुड रीड सम टाइम द काइंड ऑफ रिकमेंडेशन बेस्ड made by this group on assessment reforms. उन्होंने कहा कि we have to use varied modes of assessment, including oral testing and group work evaluation. I think this is something we really need to take seriously because बच्चों को कभी-कभी ग्रुप्स में कैसे होना चाहिए, how to interact in groups, that's a very important ability, and it is a real life situations maybe you can bring in that. And they also say that you cannot expect everything of everybody in every subject. उनका मतलब है कि अगर मैथ्स पढ़ाना है बच्चों को, why should you every child should learn everything in maths? Why can't you just say that ठीक है, अगर मुझे कंप्यूटेशन अच्छा लगता है तो मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा, या मुझे अलजेब्रा लगता है तो I'll read that. I know the CBSE has something called as basic maths and advanced maths. They have it for the 11th and 12th. I think that is a very good initiative that इसको करना है. They can choose what is the level of maths you want to take up. I think so. These are the kind of changes that have really been introduced. उन्होंने flexibility भी बोला है कि एग्जामिनेशन में 2 साल के अलग, कैन यू कीप इट 3 year विंडो, और ऑन डिमांड, अगर ऑन डिमांड भी हो सकता है एग्जामिनेशन, मतलब जब बच्चा तैयार है तब आप एग्जाम दीजिए रादर देन तुम्हारे एग्जाम्स. ऑफ कोर्स दिस इज speculative. It's going to create lot of already universities and schools have lot of pressure, but is it possible or not? This is just a line of thought. Enhanced reporting of performance and percentile ranking. तो उनका मतलब कहना है कि आप जब नेशनल रैंकिंग करते हो, स्टेट रैंकिंग, इट बिकम्स होल टू मच प्रेशर ऑन बच्चों कर कि मैं क्यों नहीं खड़ा पहले नंबर या दूसरे नंबर. इज इट ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू डिसेंट्रलाइज द रैंकिंग मैकेनिज्म? का मतलब जैसे अगर आप बच्चों को ये भी कहते कि आप स्कूल में फर्स्ट हुए या रीजन में फर्स्ट हुए, ब्लॉक में फर्स्ट हुए, तो ऑटोमेटिकली योर रैंकिंग गेट्स एनहांस्ड एंड दैट ऑल्सो मोटिवेट्स द children to perform better. So that's something which they have said, this particular program. This is a small mind. It is on stress just before exams. You can see that MEO that indicates this MEO. This says about stress. 2 weeks before the exam, it's very less, and 5 days before the exam, it increases, and then 2 days before the exam, it increases almost the size of your head. But then exam ke din, just before or the night before your examination, it almost crushes you. I think this is something we really need to take into cognizance while seeing what do you mean, developing question papers or having examinations conducted. I think this is a small mind just to time is better to have few pictures. Okay, reduction of examination. How do we reduce this examination stress? ये जो
फोकस ग्रुप था जिसकी बात मैंने अभी बात की, उन्होंने बोला कि टू रिड्यूस द लेंथ, उन्होंने कुछ टिप्स दिए थे which I think could be considered is reduce the length of the question papers, questions that require students to draw from more than one area. मतलब जब आप क्वेश्चन देते हैं क्या होता है, इट इज यानी एरिया स्पेसिफिक, व्हाई कांट बी इंटरलिंक, इंटरडिसिप्लिनरी कर सकती है ओवरलैप सब्जेक्ट्स कि सिर्फ ज्योग्राफी मतलब need not be only in geography, even political science could be integrated into the geography, but थोड़ा वो application level पर भी जा सकता है. Emphasis from short answers to MCQ. MCQs also sometimes are less stressful. Special emphasis on testing competencies and away from memories. Testing competencies में उनका मतलब है कि performance competencies. How do you perform a particular skill? Elimination of the term pass and fail. I think I'm sure all of you have know how derogatory it is to tell that your child has failed or your student has failed or I have failed. It has a huge impact on our personality, huge impact on our outlook towards life. I think that is the reason also why the non-detention policy came into being in the country and permitted repeated retakes. I think we should permit repeated retakes for children. Pass marks are just not arbitrary cutoffs, but actually measures attainment of desired competency. So this is also something which also says that we should not have pass marks rather than see if जैसे हमने minimum levels of learning की बात कर रहे तो एक desired competency level आने से भी चलता है. Another one is, can we have boards optional? I think that is the reason we had debate whether 10th standard should be considered as a board examination or not. Okay, so this is about the recommendations. So now coming up to what are the new approaches. So new approaches के बारे में जब जो UGC का जो report था, the report on evaluating reforms came out. When you see report, it says about GLOBE report, that is learning outcome based education report. उन्होंने उन पर काफी in detail they have given about the report, and I'm sure some of the universities and even colleges are adopting this report. You should read that, which is saying learning outcome based education, forwarded by SPADIS. I don't want to go much in details about this particular kind of report, this particular technique, because I'm sure most of you know, but it says that it gives this kind of an approach. If you follow, it gives a clear picture of what is important for students to be able to do, organizing the curriculum, instruction, and assessment to make sure that learning ultimately happens. So actually ये एक नया मॉडल है जो UGC रिपोर्ट में दिया गया है और उन्होंने विस्तार से इसमें दिया है इस अप्रोच के बारे में. अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आगे आपको रेफरेंस दूंगी, आप इसको पढ़ सकते हो. इनका कहना है कि ये जो अप्रोच है, इससे आप शायद आप उस दायरे के बाहर नहीं जा सकते, आप थोड़ा एक रिजिड अप्रोच होगा. यू विल डिफाइन, मतलब आप अपने बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते हैं. तो मतलब उन्होंने कहा एग्जिट आउटकम्स आप डिफाइन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस टारगेट्स डिफाइन कर सकते हैं. उसके इट्स समथिंग लाइक पहले आप प्रोग्राम डिजाइन करो, उस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स होने के बाद आउटकम्स क्या होंगे इस प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम के अंदर फिर क्या कोर्सेज देंगे, तो हर कोर्सेज के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और हर कोर्स उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आप क्या यूनिट्स, कैसे यूनिट्स डालेंगे. सो दैट इज द काइंड ऑफ it's basically a क्या कहते हैं systems approach for design and development. It's a very old kind of systems approach. मतलब सिर्फ इसको अब क्या कहते हैं उसको, old wine in new bottle or something. Yeah, that's how it is. So this is the kind of a thing. So this method has always been there before also, only that the terminologies have changed. बट उनका कहना है कि दैट इट हैज टू बी दैट जो भी एक्टिविटीज करते हैं आप ऑथेंटिक एंड रियल वर्ल्ड सेटिंग्स एंड प्रमोट एक्सटेंसिव यूज ऑफ हाई टेक्नोलॉजी टूल्स. थोड़ा एडवांस है अप्रोच में. एम्फेसिस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स कोर्स आउटकम्स, यूनिट आउटकम्स, लेसन आउटकम्स. एंड ऑल्सो इट सेज शायद बच्चों को भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर मुझे ये कोर्स कंप्लीट करूंगी तो मेरे में क्या क्या स्किल्स डेवलप हो सकते हैं. सो दैट इज समथिंग. This kind of an approach is going to make it very transparent for the children and also for the staff. तो इनका कहना है कि कोर्स लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं, नैरो स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू नो एंड बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ द कोर्स. अगर आप कंप्लीट कोर्स करोगे तो फॉर एग्जांपल अगर आप ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का कोर्स ले रहे हैं तो अल्टीमेटली जब आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं यू कैन वन स्मॉल कोर्स आउटकम हो सकता है कि
I can maybe launch a website or launch an online platform to upload resources. That could be one of the small learning outcome. Or also maybe develop a resource for a particular class to teach a particular subject. That could also be a learning outcome. So the course learning outcome must be measurable, attainable, and manageable, so in number. And it says it's contribute to attain PLO, that's program learning objectives, in such a way that each CLO should address. इनका मतलब है कि the program learning objectives and the course learning objectives has to be in coherence. जैसे if the program is about open education, then the course learning option OER can fit in a PLO, in a program. That also speaks of the program education outcomes and the program learning outcomes. So this is a huge terminology. I think तो technical है. अगर आप report देखेंगे, you will come to clearly knows. So generally, वही institution का क्या mission है. Based on that, you start programs. And what is the kind of attributes, मतलब क्या competencies आप develop करना चाहते हैं बच्चों में. That is what it means by GAs, gratitude aptitudes, attributes. It speaks of program learning outcomes and then course learning outcomes, course learning competencies. I don't want to get much details because it's there in the report. You can just go through. This is a small picture of this whole report. आप एक छोटा सा मैंने आपको सिर्फ glimpse दिया. आप ऊपर देखो program education objective, program learning objective, उसके अंदर competencies होंगे. हर competency के लिए शायद आप कुछ या 2-3 competencies को मिल करके आप prepare develop a course and then course के बाद वो सब clear. So that this is actually a systems approach to design a curriculum or design a program or design a course for a particular university. Okay, so this is something about this new approach which has been I think shared by the documents. In I have given you the report which is called published in 2019, evaluation reforms in higher education institutions. Coming up next. Okay, now coming up to the new education policy 2020. आप सब लोग जानते हैं ये जो पॉलिसी जब हुआ था इसके पीछे काफी विगरस काम हुआ था. I remember 2016-17 में the government of India had a website calling for calling for suggestions and recommendations from public. Different stakeholders से उन्होंने अपने अपने विचार मांगे थे. सब विचार को उन्होंने एक वेबसाइट भी तैयार किया था जिसमें teachers and organizations and NGOs could submit their responses. उसको सबमिट किया, फिर कंपाइल हुआ, फिर 2019 में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भी निकला था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका भी फीडबैक लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. एंड देन फाइनली 2020 ने वी केम आउट विद a very crisp and a very forwarding report. It's called the New Education Policy 2020. And unfortunately उस वक्त हमारा पैंडेमिक भी शुरू हुआ था. That's the thing. This ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने काफी रिफॉर्म्स उस डॉक्यूमेंट में किए हैं. जैसे टीचर एजुकेशन में किए हैं, उन्होंने टीचर लर्निंग प्रोसेस में किए थे. हाउ दे हैव सेड दैट वी हैव टू शिफ्ट टू टेक्नोलॉजी मच. 21st सेंचुरी स्किल्स पर उन्होंने क्या क्या फोकस किया है. एंड एक उन्होंने थोड़ा रिफॉर्म्स पर भी काफी उन्होंने उल्लेख किया है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में. सो दे केम इंक्लूडिंग असेसमेंट. बट उन्होंने क्या उस रिपोर्ट में क्या बोला है कि असेसमेंट मस्ट बी कंटिन्यूअस टू इंक्लूड बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव कंपोनेंट्स इन अ टाइमली फैशन फॉर कंटिन्यूअस फीडबैक. सो दिस इज वन ऑफ द रिकमेंडेशंस कि उन्होंने कहा कि दोनों फॉर्मेटिव मतलब साल भर और साल के अंत में भी होना चाहिए असेसमेंट. लेकिन इसका जो टाइमिंग्स है, you need to really think appropriately to have it for the feedback and continuous feedback की भी बात की. I think that is very important. अनेक बार बच्चों को पता नहीं चलता कि उनको क्यों इतने कम मार्क्स मिले या why have they not achieved more. So वो हो जाता है. And in 11th September 2020 while addressing the conclave on school education, आप जानते हैं ये तब I think it was a live telecast on YouTube. The Honorable Prime Minister of the country had announced that he will establish a national assessment center, that is PARAK. So basically a assessment platform, PARAK, would be established by the government for compiling the complete, monitoring the assessment in the country. So PARAK actually is a huge national assessment platform, which is going to be, I think फिलहाल मैंने काफी ढूंढा, I did not get, and मैंने schools में भी पूछा है. So I'm still not sure at what stage this particular platform is, but as far as I know, मुझे बताया गया है कि अभी तक पराग schools तब है, but तुम अगर आप इसमें थोड़ा पर if you go on the website and see, it seems that it's also going to be for higher education, but
शायद इनिशियली स्कूल्स में होगा. And Parak is one of the significant reforms of NEP. Okay. So actually, government, I don't know if you're on news, there's also a STARS project which has been funded by the World Bank. जो 5 states में it's already been implemented. तो उन्होंने भी उसमें भी असेसमेंट पर भी उन्होंने ध्यान दिया है. तो वो लोग जब असेसमेंट करने वाले हैं उस राज्यों में, तो वो लोग भी परख का इस्तेमाल करने वाले हैं. सो दैट्स समथिंग व्हिच आई आल्सो कम टू नो very vaguely, but it's still not very concretely out on the public domain. Coming to Parak. Parak is a national assessment center, which we established to improve the overall evaluation system, and Parak stands for Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development. So this is actually a full form of Parak. It is an independent and autonomous institution under the Department of School Education and Literacy. So that's going to be established by them. Emphasized on improving, providing quality and industry-related education. It's quite possible that they also want to read education to the industry, so that we don't have to face much of an employment as we are facing today. कहना है कि ये परख का फुल फॉर्म है जो मैंने आपको दिखाया है, और ये इंडिपेंडेंट रहेगा. अब ऑटोनमस पे रहेगा. अब मुझे ये नहीं पता है कि बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, बट हमें ये पता नहीं वेदर इट्स गोइंग टू बी अ प्राइवेट बॉडी, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली वो वेब प्लेटफॉर्म पर रहेगा. तो इसको कौन मेंटेन करेगा, तो अभी वो सब अभी तक नहीं पता है पूरी तरह से. But it denotes standard setting body for all school boards approved by the National Education Policy. It is said that there are almost 60 odd examination boards in the country. So मतलब आप जानते हो कि आई थिंक लास्ट मंथ, पिछले महीने में एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, हैव पब्लिश्ड अ ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो. तो उसी तरह शायद यहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड सेटिंग, उसी आइडिया पर शायद ये आई कैन सी दैट देयर इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी. मतलब हर स्टैंडर्ड्स और हर बोर्ड्स के अंदर स्टैंडर्ड्स आर गोइंग टू बी एस्टैब्लिश. जैसे टीचर्स को बोलेंगे कि इंक्रीमेंट्स विल डिपेंड ऑन योर स्टैंडर्ड्स. ऑफ कोर्स वो तो अभी ड्राफ्ट है, एनसीटी ने जो डाला है शेयर, सो आई एम नॉट श्योर उसको अभी तक फाइनलाइज किया या उसका फाइनल डॉक्यूमेंट इज नॉट ऑन द पब्लिक डोमेन. ओके, सो उसी पर आई थिंक क्या प्रीमाइस पर the national assessment center also going to be set up to move school boards from high stake examinations towards holistic assessment. High stake मतलब less stress करना चाहते हैं, and towards holistic assessment मतलब दोनों scholastic और co-scholastic areas पर ध्यान देना चाहते हैं. And it is a good move actually. It is actually a paradigm shift if you really succeed in coming up with this kind of a movement. I think it would be a huge move and then movement, I think, for a country like India. Despite, I think, I want to share, okay, despite of this examination stress, I am sure most of you know that Indian children, a lot of Indian children after university education go abroad and they contribute to the economy of the other countries also apart from India. I think that's a huge applause also to the education system in the country and also the teachers and the parents, because हमेशा वो रहता है कि बच्चे should do well in their schooling. That is something very I think it's organically present. मतलब वो पता नहीं सालों से है इंडियन ब्लड में कि बच्चों को हमेशा अच्छा परफॉर्म होना चाहिए. इसी को कंटिन्यू परख के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने दे ऑल्सो सेट परख का क्या फंक्शंस रहेंगे, वो गाइडलाइंस भी देंगे. वो टूल्स जो स्कूलों में यूज होना चाहिए असेसमेंट के लिए उसको भी उन्होंने रेकमेंड करेंगे. शायद द टूल्स वुड आल्सो बी अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग सच असेसमेंट फ्रॉम फाउंड. एंड दिस इज यहाँ पर दिखता है कि इट्स फ्रॉम फाउंडेशनल टू हायर एजुकेशन, मतलब राइट फ्रॉम स्कूलिंग टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक होगा. एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग एंट्रेंस एग्जाम्स कैसे होने चाहिए, टेस्ट वो भी कैसे. दिस ऑल्सो विल बी गाइडेड बाय परख टू एंश्योर इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज for all, including learning disabilities. I think this is a very good thing that the document really highlights, and it's very obvious in the document कि उन्होंने learning disabilities पर काफी emphasize किया हुआ है. This is a very good thing, I think, because आप लोग जानते हैं कि integrated education है भारत में, but उसको उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना actually देना चाहिए. And I think ये policy काफी इस मुद्दे पर उन्होंने
क्या कहते हैं वेटेज दिया हुआ है. ऑल्सो गाइडिंग द स्टैट, जब मैंने आपको पहले से भी बात किया कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नया स्टेट अचीवमेंट सर्वे, नेशनल सर्वे अचीवमेंट सर्वे ऑफ कोर्स ये एनसीईआरटी करता है, तो 2001 से कर रहे हैं. ये उनको भी गाइड करने वाले हैं. नेशनल असेसमेंट सर्वे ऑफ स्टेट अचीवमेंट जो रिसर्च करते हैं, दे नो हाउ इम्पोर्टेंट द डेटा इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर्विस, and they're also going to facilitate all school boards to shift their focus towards meeting the skills of requirements of 21st century. I think 21st century skills का काफी महत्व दिया गया है इस रिपोर्ट में, एंड शायद परख भी उसी लाइंस पर वो अपना टूल्स भी डेवलप करेंगे. So the National Testing Agency NTA will work to offer a high quality common aptitude test as well as specialized common subject examination at least twice every year. So this is something which some of the recommendations done by the Parak, and NTA testing services will enable most universities common entrance examinations and fellowships. So these are the kind of services that is likely going to be provided by the Parak platform. Okay, so this is something very brief about Parak. मैं ज्यादा कुछ नहीं ला सकती बिकॉज जब मैं पूछ रही थी स्कूलों में तो टीचर्स तो मेरे को बोलते कि अभी तक फिलहाल दे स्टिल नॉट अवेयर, बट आई एम श्योर इट मस्ट बी देयर. Maybe you have to find the right source to give more information on Parak, or maybe we are still in a very developing stage, in a very nascent stage. शायद कुछ 1-2 साल में I think we will come out clearly to know what Parak is about. So ultimately, this is almost my last slide है ये मेरा. Whatever we are moving to, जो भी हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, सुधार ला रहे हैं असेसमेंट में, काफी कंसर्न्स भी है मेरे में, बिकॉज मैं पढ़ चुकी हूँ, बिकॉज आई एम वेरी नो कंसर्न्ड अबाउट चिल्ड्रन. मैं हमेशा देखती हूँ तो बच्चों की तरफ से ज्यादा देखती हूँ, रादर फ्रॉम अ टीचर और फ्रॉम अ सिस्टम पर्सपेक्टिव, कि कभी कभी लगता है कि आर वी एम्फसाइजिंग स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग, बिकॉज आप जानते हो कि स्टैंडर्डाइजेशन इज बिकम नाउ अ फैड इन द वर्ल्ड. विदेश में भी बहुत ये चल रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्टिंग पर ज्यादा भार चल रहा है. सो मच ऑफ एम्फसाइज ऑन स्टैंडर्डाइजेशन. आई मीन अभी एम्फसाइजिंग बिकॉज डर इस बात का है कि भारत में आप जानते हैं कि इतना डाइवर्सिटी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल स्किल्स, मतलब एवरीथिंग, ट्रेडिशन. सो हर राज्य में जो स्किल्स, जगने की जो लिविंग स्किल्स होते अलग रहते हैं. तो अगर आप स्टैंडर्डाइज करेंगे, डू यू थिंक इज इट अप्रोप्रिएट टू कंपैरिजन ठीक रहेगा बच्चों को? ऊपर से क्वांटिफिकेशन, अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते, इट मींस क्वांटिफिकेशन. क्वालिटेटिव कहाँ जा रहा है फिर? वेयर इज द क्वालिटी कंपोनेंट व्हाइल वी आर असेसिंग? उसका क्या होगा, वो कैसे करेंगे? एंड फिर टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग करेंगे तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कहाँ जाएगा? एटीट्यूड्स का क्या होगा, यू नो, स्किल्स का क्या होगा, परफॉर्मेंस का क्या होगा, इमोशंस का क्या होगा? So this is all my concern. Ultimately, can we withstand the whole crisis in life? आप जानते हो कोविड में बच्चों को कितनी तकलीफ हो, they were not able to emotionally support themselves. So that's very important. ऊपर से large scale assessment की भी बहुत हो रहा है, because lot of international bodies are approaching India to do this compare. आप जानते हैं अभी पिसा होने वाला है. पिसा is an international examination system where countries students participate, and जैसे आपका ओलंपियाड को होता है, ओलंपियाड ऑफ कोर्स इज नेशनल लेवल, बट पिसा में अचीवमेंट टेस्ट होता है सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स में, एंड यू कंपेयर अक्रॉस द कंट्रीज परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स. सो वो भी हो जाता है. सो दैट उसका भी प्रेशर हो जाता है कि फॉरगेट नेशनली, हमको इंटरनेशनली भी वी हैव टू स्टैंड ऑन द टॉप मोस्ट पेडेस्टल. तो वो भी हो जाता है. सो इट वुड इम्प्लाई कंपटीशन, मतलब और कंपटीशन बढ़ सकता है. एंड अनदर थिंग इज, मैंने आपको बोला था कुछ वक्त जैसे एनपी जब आया था, हम काफी डिसेंट्रलाइज मोड में गए थे, जहां पर हम वी वेंट फ्रॉम अ सेंट्रल टू स्टेट वाइज एंड लोकलाइज सिस्टम्स पर गए. लेकिन मुझे लगता है कभी वो रिवर्स तो नहीं हो रहा, अभी गोइंग बैक टू सेंट्रलाइज मॉडल्स. एंड वो अल्टीमेटली क्या, व्हाट विल हैपन टू द वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट? बच्चों का क्या होगा इस सब में, इस पूरे रेस में, हमारे रिफॉर्म्स में, हमारे एक्सपेक्टेशंस में, बच्चों का क्या होगा? दिस इज अ होल क्वेश्चन मार्क which I leave it to you, the audience, teachers को, administrators को, school faculty and college staff की.
बच्चों का क्या आगे होगा, मुझे उस पर थोड़ा डर है. तो आई ऑलमोस्ट नाउ almost with close of my lecture, I just want to share a couple of pictures maybe which give some kind of message we can take with us after this session. ये बच्चे माँ से कहता है, आई एम श्योर आई विल बी प्रमोटेड दिस ईयर, माय टीचर सेड either I go or she goes. इसका दो मतलब हो सकता है कि बच्चा कहता है, आप एक भी देख सकते हैं बच्चों में कितना इनोसेंस रहता है जब पहले पहले स्कूल में जाते हैं. दे डोंट नो व्हाट इज फेल एंड व्हाट इज पास. जैसे प्राइमरी, लोअर प्राइमरी देखो या किंडरगार्टन में देखो या किंडरगार्टन, उनको रैंक का भी नहीं मतलब होता, पता चल जाए. जैसे उनको कहो कि तुम्हारा रैंक 30 पे, बहुत खुश होता है कि अरे मैं तो एक रैंक बच्चे से भी काफी, मेरा रैंक हायर है, इट्स ग्रेटर देन द वन रैंक. सो दैट इज दैट इनोसेंस. बट मेरा ये भी यहाँ पर और एक भी मैसेज हो सकता है, टीचर से either I go she goes. अब जानते हो जो स्टैंडर्ड्स एनसीटी हैज कम आउट, इट आल्सो हैज इम्प्लीकेशन फॉर टीचर परफॉर्मेंस एंड इंक्रीमेंट. सो इफ यू डोंट, मतलब ये भी हो सकता है कि क्वाइट पॉसिबल आगे अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो टीचर भी फेल हो सकता है. दैट कुड बी दैट आल्सो. या ये भी हो सकता है कि either I go, मतलब बच्चा ये भी कह रहा है कि शायद मैं नेक्स्ट क्लास में रहूंगा, टीचर उसी क्लास में रहेगी. सो there's a lot of angles to this whole picture. It all sees how you accept it, but I largely sees that the innocence in a child, क्या हम इसको रिटेन नहीं कर सकते हैं एग्जामिनेशंस के बारे में. नो, वो क्यों आगे जाके इतना कम्पिटिटिव होता है, क्यों बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब उसको 2 मार्क्स कम हो जाता है तो रो के आता है, क्यों रोना चाहिए. इवन इफ यू हैव नॉट स्कोर्ड 100 out of 100. तो उसकी बात हो रही. सेकेंड नेक्स्ट, एक मिनट, क्या ओके, ये है, ये थोड़ा मुझे ये हायर एजुकेशन की बात है. ये बच्चे, ही इज आस्किंग, डू यू हैव एन आइडिया फॉर योर प्रोजेक्ट मैट येट. तो बच्चा कहता है, नो, आई एम वेटिंग फॉर एन इंस्पिरेशन. देन फिर वो चिटके कहता है, यू कांट जस्ट what is this, cork on creativity like a faucet. You have to be in a right mood. Faucet मतलब नल का जो जब खोलता है ना, ओपन द टैप एंड देन देयर इज द होल वाटर गशिंग आउट. उनका ये मतलब कि फॉसेट मतलब वही ओपनिंग. अब खोल नहीं सकते ना, अचानक तुमको इंस्पिरेशन आ सकता है. देन ही फिर वो पूछता है, व्हाट मूड इज दैट. इज लास्ट मिनट पैनिक. ये हायर एजुकेशन में हमेशा होता है. आप देखो कि हमें, क्योंकि हमने टर्मिनल एग्जाम्स रखे तो पूरे साल बच्चे रिलैक्स है, बट जब असाइनमेंट सबमिशन की बात आती है या एग्जामिनेशन की बात है, बच्चों उसी के लिए वेट करते हैं, उस पैनिक बटन के लिए वेट करते हैं. हम उस पैनिक बटन के लिए क्यों वेट करते हैं. दिस इज द होल, उस पिक्चर का यही मतलब है कि दे रिलैक्सिंग द होल ईयर एंड डू. सो इट्स अ ह्यूज, इट्स अ वेरी नाइस माइंड बिटवीन एन एनिमल. मतलब एनिमल्स आपको जैसे सो इनोसेंट, उनको पता नहीं, बट ह्यूमन बीइंग्स हाउ वी टेक अप टास्क, हम कितना प्रोक्रास्टिनेट करते हैं. मतलब ना, आज का किया हुआ काम हम कल करेंगे, परसों करेंगे. जब तक तो पैनिक बटन या डेडलाइन नहीं आता हम काम नहीं करते. तो उसके लिए क्यों हम लोग इंतजार करते हैं. एंड फाइनली ये वाला है, ये बच्चा अपने पापा से कहता है, आई विल ऑलवेज से इफ यू डोंट नो द आंसर जस्ट कीप आस्किंग अंटिल यू डू. मेरा ये बच्चा, ऑफ कोर्स ये मैं दूसरे सिचुएशन में, मैं सिर्फ वो कैप्शन को देख के मैं बता दूं, बच्चा पूछ रहा है पापा से कि जब अगर आपको एक आंसर नहीं पता है, आप सिर्फ पूछते रहो जब तक आपको आंसर मिल नहीं जाता. तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये स्कूलों में क्यों नहीं होता है कि बच्चे क्यों नहीं पूछते, और जब तक बच्चा को आंसर नहीं मिलता तो वो पूछते क्यों नहीं. सो दिस इज द होल थिंग. अगर वो उसी वक्त बच्चे अब दिस क्लियर देयर डाउट्स या उनको आंसर मिल जाता है, तो वो प्रेशर जो होता है एग्जामिनेशन में वो काफी कम हो सकता है. सो ये मेरा आखिरी थिंग, मतलब ये मेरा थिंग. सो इट्स लाइक दैट. तो आई जस्ट वांट टू रैप अप दिस सेशन. में इस सेशन को मैं यहीं पर रैप करना चाहती हूँ, कहने से कि इज इट पॉसिबल टू, बच्चों में जो इनोसेंस होता है, क्या हम उसको क्या कहते हैं प्रिजर्व कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं तो कैसे, जैसे एटलीस्ट लोअर प्राइमरी लेवल उनको पता ही नहीं चले एग्जामिनेशन क्या है, नहीं होना चाहिए एक्चुअली. in fact they should not know that they are giving an examination. That is one. Second thing, अगर है, जब हम बड़े हो जाते हैं हम क्यों पैनिक बटन के लिए वेट करते हैं. why is it that हम अपना पैनिक को, स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द ईयर. स्ट्रेस एक तो होना ही नहीं चाहिए, अगर हो तो क्यों हम थ्रू आउट द ईयर काम नहीं करते. एंड थर्ड, क्लासरूम्स अगर ऐसे हो कि बच्चा उसी वक्त अगर पूछ लेता कि क्या है, यानी जब तक आंसर नहीं मिलता वो शांति से नहीं बैठता है, तो शायद एग्जामिनेशन हमारे काफी अच्छी और
we could have really had a very different kind of exams. So thank you so much. Yeah, I would like to thank. Okay, so participants, anyone want to ask any question from madam? Yes, anyone from participants? Hello. Okay, madam, I just wanted to ask you, can I ask one question? Yeah, please. Actually, what I was thinking, Parak is a national assessment center. It is a centralized body. Yeah. So, ma'am, don't you think it will, it will lead to over centralization, over testing of student? Because in India, urban and rural students, there is a vast difference. Yeah. And having only one assessment central body, what do you think, ma'am? No, yeah. Even if Parak is a central body, there is going to be autonomy for the states, because ultimately you have to develop this test in your own languages, and I'm sure the center would permit you to use your cultural context during preparation of tests. So there is going to be flexibility, because I'm sure we have learned so far that we cannot have a common testing pattern at all. वो तो नहीं होगा. I don't think so. Maybe वो guidelines issue करेंगे, because this education is a state subject, so every state can decide on their own. Yes. Sure. Yes. Okay. Anyone from participants? Okay, ma'am. As you can see in the chat box, this session was really very informative and nice session. So thank you so much, Jyoti ma'am. Thank you for being with us. Yeah, thank you so much. And I would like to thank Vidyalankar Polytechnic to invite me and give this opportunity to speak about assessment reforms. Thank you so much. Thank you, Pratik. Yeah, thank you so much. Thank you, ma'am. And participants, moving forward, I would like to ask Rohit sir and Helena Tandel ma'am. Can we start the session, or should we wait for 1 or 2 minutes? Ma'am, we'll wait for 2 to 3 minutes and then we'll start. Okay. Let the participant take a little bit of break. Okay, sir. Okay, no problem. Yeah, I take a leave then. Thank you. Bye. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, we'll start the session sharp at 3:30. Okay. Okay, Rohit sir and Helena, miss, shall we start the session? Yes, ma'am. Okay. So for today's workshop, our first speaker is Professor Rohit Sharma sir. He's lecturer in Department of Electronics and Telecommunication Engineering in Vidyalankar Polytechnic. And topic for the today's workshop is making learning awesome using Kahoot. And our second speaker is Professor Helena Tandale ma'am.
She's also lecturer in Department of Electronics and Telecommunication Engineering in Vidyalankar Polytechnic, and her topic is word wall. So, sir and ma'am, you can start your session. Over to you. Yes, thank you, Sandhya ma'am. Yes, good afternoon, everyone. Myself, Rohit Sharma. I am a lecturer in electronics department in Vidyalankar Polytechnic. So before I go to my today's topic, as we all know, because of COVID, we have switched our traditional classroom teaching to an online teaching. And can I assume maximum time all the teachers use maybe one or two different methods to take the lectures? One of the common method that teachers take is they show the PPT, they start explaining the PPT, and after the PPT, they ask few questions to the students. But in this, the questions are not asked to all the students. Maybe there will only few students who will be asked questions. So when we say teaching, जब भी teaching कर रहे हैं, एक monotonous हो जाता है PPT, question answers, PPT, question answers. तो कोई एक fun element नहीं रहता अपने teaching में. So to add that fun element in our teaching, और अपने सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाना है, अपन को सब्जेक्ट रिलेटेड एक फन टीचिंग चालू रखना है. फॉर दैट this is the session that we are going to do, and in this we are going to go for two different things where we can go for fun type of teaching. In that, the first one is Kahoot, which I will be taking, and the second one is World War, which Helena ma'am will be taking. So before I start what is Kahoot, how students are going to enjoy this Kahoot, what I want today is, please be my student for today and try to बोलते ना कि आप लोग उस Kahoot को try to enjoy. If you are able to enjoy, I guarantee you even student will start enjoying it. So for this, what you have to do is सिर्फ एक app download करना है आप लोगों को. I'm just posting that link of the app. Google Play Store पे जाओ. Just I want each and everybody to download this app. I guarantee you it will be really a fun session. And once it is done, please acknowledge me. Please, it's a request. Please, everybody download this app. The app name is Kahoot. That is Kahoot. Just download it. I'll let you know what to do in that. And I hope my screen has been shared. Yes, Rohit sir, screen is being shared. Please download the app known as Kahoot. Once it is done, please acknowledge me in the chat box. Because you are today going to play first this Kahoot, and then I'll explain you how to create quiz and everything in Kahoot. बोलते हैं ना पहले अपन directly output product क्या है, we'll see that, and then we'll start performing how to make that product. So I'll just wait for 1 or 2 minutes. And I hope everybody is on mobile phone, because you have to switch your screen from Zoom to what? You have to switch your screen from Zoom to your app, that is Kahoot app. So once you have downloaded it, just open that app. It will ask you already have an account login. No need to do the login. Directly click on next and choose an account type. Please keep it as a teacher. So what best describes your current workplace? You can either write school, higher education, business, other, depending upon your choice. I'm selecting school.
Okay, now it says create an account. If you want, you can create it using your Gmail account also. You can directly click on sign up, and directly you can click using your Gmail account. Once it is done, please acknowledge here. Once you are on the screen, where at the bottom, at the center, you can see enter pin icon. Because I'll come to know how many of you are joining this game. And please, once it is done, when your app is ready, please at the center of the app, you can find enter pin. Just click on that. And please, you have to type the pin which you can see on the screen. That is 422187. The game pin is 422187. So Subhashini ma'am has joined. Enter the pin and give your nickname or your whole name. Jew. So 2 participants have joined. The third one has joined. Fourth, Jenny ma'am. Please join fast. Yeah, Jasmine ma'am has joined. I want at least minimum 20 participants in this. Nine of you have joined. Chalo, 10. Very good. 11, 12. I'll wait for 2-3 minutes for others to join. Snail ma'am, what you want me to repeat? Snail Patil ma'am. Okay, now since 17 of you have joined, okay, I'll just let you know how this game or quiz is going to be. Okay, I have prepared one story for you. Okay, initially there will be few slides. This slides pay, I'll be narrating a story. Depending upon that story, there will be few quizzes. In simple words, first half of the story will be there, maybe 3 to 4 questions of the quiz. Again, the story will continue, again few questions. Story will continue, again few questions. So please, you have to listen the story properly. Depending upon that, you have to answer it. Now,
स्टोरी कहाँ सुनोगे आप लोग? प्लीज अगेन यू विल बी लिसनिंग द स्टोरी ऑन दिस जूम ऐप. प्लीज इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू. आपको स्विच करना है स्क्रीन को फ्रॉम जूम ऐप टू योर कहूट ऐप. तो स्टोरी आप लोग जूम ऐप पे सुनोगे. जूम ऐप पे फर्स्ट क्वेश्चन विल पॉप अप. Okay, that question will have 4 options. Please listen it carefully. The question will have 4 options. Okay, वो options आप लोग को स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे काहूट के. आपको सिर्फ वो कलर्स दिखेंगे 4 ऑप्शंस के. अगर मैं बोलता हूँ कि यस विच इज माय फेवरेट कलर, विच इज माय फेवरेट कलर, और I'll say it is a red color, and ऑप्शन में आपको दिया रेड, येलो, ब्लू एंड ब्लैक. तो प्लीज रेड, येलो, ब्लू एंड ब्लैक आपके ऑप्शन में नहीं रहेंगे. रेड पे अगर येलो कलर है तो आपको वो येलो कलर पे क्लिक करना है ऑप्शन में. यू विल कम टू नो व्हेन यू विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद 15 स्टूडेंट्स ओनली. लेट मी स्टार्ट. ओके, आई विल स्टार्ट नरेटिंग द स्टोरी फर्स्ट. ओके, इट्स अ डेमो क्विज फॉर यू ऑल. सो द फर्स्ट स्लाइड सेज व्हाट? देयर आर 3 फ्रेंड्स. Okay, out of which one friend come running and he says, hey, first day of the school, how are you? 3 दोस्त है, उसमें से एक फ्रेंड आ रहा है 2 दोस्तों के पास और वो बोलता है कि अरे अपने फर्स्ट डे स्कूल का है, हाउ आर यू ऑल? आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. एज यूजुअल वो फ्रेंड रिप्लाई करता है, आई ऑलरेडी मिस द समर हॉलीडेज. I already missed the summer holidays. I want you to listen it carefully. Depending upon this, there will be a question. So it says, I already missed the summer holidays. अब वो फ्रेंड बोलता है, अरे you say this every year. हर बार आप यही बोलते हो कि आपने मिस कर दिया समर हॉलीडेज एंड ऑल. एंड वही टाइम पे उसका मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है. वही टाइम पे एक फ्रेंड के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया. चलो नोटिफिकेशन आ गया, चेक करते हैं अभी नोटिफिकेशन क्या है. वो बोलते हैं वियर्ड, आई रिसीव्ड अ मैसेज. उसको एक मैसेज आता है एंड द मैसेज सेज दिस TEEMSTEL, समथिंग वियर्ड मैसेज दैट्स वन ऑफ द फ्रेंड हैज रिसीव्ड. ओके, अब उसी पिक्चर में देखो, जैसी वो रीड कर रहा है उसके दूसरे फ्रेंड के मोबाइल पे भी एक मैसेज आ गया, एक नोटिफिकेशन आ गया. Now, what is that notification? We'll see. Same, the sender is unknown and it says some weird message, that is YLETAIDEMMI. So, 2 of the friends are getting the same weird messages. So, understood the first 5 part of the story? First 5 slides पे क्या लिखा था? Now, depending upon this, I will start a quiz. And very important, please, ये quiz is just for 30 seconds. 30 seconds में reply करना है. Who are these kids? 4 options है. You have to click on the correct color of the option. Are they computer scientists? Are they a basketball team? Friends from school or a rock band? जो आंसर है वो कलर आपको काहूट ऐप में जाके क्लिक करना है. I have received 9 answers, 10 answers. 11 answers, 14. Yes, the time is up. Now nobody can answer. Now here see what happens now. Out of 15 students, 12 have given the correct answer. 2 have given the answer as their basketball team and 1 has given the answer as computer scientist. So I hope कि आप लोग को समझा है कि आपको आंसर्स कैसे देने हैं यहाँ पर. Okay, चलो first question हो गया अभी. Okay, now we'll switch to the second question. Again, the second question will be only for 30 seconds. All the questions will be of answering will be only for 30 seconds. Next, अब देखते हैं out of this 12, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी, किसने फास्ट आंसर दिया. बिकॉज इन दिस द मोर फास्ट यू गिव द आंसर उतने ज्यादा पॉइंट्स आप लोग को मिलेंगे. सो विल सी कि किसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं. नाउ हियर यू कैन सी वी आर शोइंग यू द फर्स्ट 5
the topper now, जिसने सबसे fast answer दिया, that is Manisha ma'am. So he is leading now. The next second is Virat sir, Jasmine ma'am, Subhashini ma'am, and Anim Peter sir. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि yes, एक competition भी है और साथ साथ में there is one race also. The faster you give the answer, the more points you will get. Okay, so please be quick to answer the second question. Huh? So the second question is coming on the screen. When is this adventure taking place? Is it the first day of the summer holiday, first day of the school after the summer holidays, middle of summer, or middle of winter? Please click on the correct color. So we have received 16 answers. Just 5 seconds left. 4, 3, 2, 1. So we have received 17. Out of that, 11 students have given the correct answer. Now we'll see out of that 11 now who is the topper now. Okay, the values will be the addition of the first quiz and the second quiz. Still the same. Manisha, oh, Virat sir has come now to the first place. Jasmine ma'am to the second. Third is Subhashini ma'am. Fourth and fifth. Very nice. Chalo, next question. Something weird is happening. What happens to all the kids? This is the question. Something weird is happening. What happens to all the kids? They lost their internet connection. They received a message from president. They received a strange message. All the phones broke. All their phones broke. So see, till now I was reading the question and giving you the option. Now I won't read any question, neither I'll give you the option. You have to read it. You have to check what is the option and you have to take the correct answer. So 14 of you have given the correct answer. Now we'll see who has given the answer and who is at the top now. Same. Virat sir is at the top. And the last three are coming up little bit, coming one by one up. Very nice. Chalo, we have finished with the first part of the quiz. Now we'll continue with the story. The story says, okay, now the fourth friend has come. And what does that fourth friend say? Hey guys, you will never guess what I just got. वो भी आके वही चीज बोल रहा है कि अरे आप लोग को नहीं पता मुझे क्या मिला है. तो चेक करते ही आगे क्या बोलता है. तो आप उसमें से दूसरा फ्रेंड बोलता है लेट मी गेस अ टेक्स्ट मैसेज विद सम मम्बो एंड जम्बो. तो दैट फ्रेंड गॉट शॉक. वो बोलता है हाउ डिड यू नो दैट. एंड ये क्या बोलता है कि ओके इवन आई गॉट अ मैसेज which says it is EHTDNIH or some weird message. Now अभी तक तो 3 लोग को मैसेज मिल गए थे. Now at the same time even the fourth friend got the message. Oh no, now it's my turn and mine says some weird message. Now at last one of the friends again come running to them and says, hey listen. And all the four friends says, Arey, we know you got a nonsense message. What does they say? Arey, we know you got a nonsense message. Okay. Now, depending upon this, there is one more. Yes, it is not a nonsense message. The last friend says, it is a secret code. What does it say? It is a secret code. So now depending upon this few slides, there are few questions. Chalo, start. The question says, why are the kids surprised? So 9, 10 answers I have received. Only 10 seconds left. So let's see now. 14 of them have given the correct answer. Let's see who is at the top now. Yes, Virat sir is leading this.
The next second is Jasmine ma'am. Next question. How did everybody know that Adam received a weird message? Sorry. Just 9 seconds left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Let's see. I hope again Virat sir will be only leading. Yes. Snail ma'am is coming little up. Chalo, next question. What's Adam's explanation? What does that Adam give as an explanation? विराट सर, is it so कि आपको पहले से आंसर्स पता है? Yes, विराट सर. और आपने सिर्फ एक नाम दिया है विराट. Is it your name or is it Virat Kohli, sir? So 11 of them have given the correct answer. Yes, very good. Again, Virat sir is leading. The next question. Yes, it's the story again. The message, what does it say? That secret code, the message, all written backwards. It means wo jo bhi weird message say, we have to read it in backward direction. Okay, so see, you can read them from right to left. Backward means from right to left. So the quiz again starts. So, okay, let's try to decode all our messages now. Whatever weird messages all the friends have got, they'll start decoding it now. So what was the meaning of this? So read it, remember to read backwards. So it's let's meet and let's make 18 answers. So again, Virat sir is leading. The next, what is the meaning of this? EHTDNIHEB. Remember to read backwards. Maybe it's the last question now. Yes. Okay. So it says now let's all go together and solve this mystery. उनको एक secret code मिल गया था. Now they are going to solve that mystery. इसका एक episode 2 भी था, but I've just taken the episode 1. Okay. So now at the end, okay, we'll come to know who was the first one, who was the second, and who came third. So the third one was Jasmine ma'am with 6813 points. Annie Peter, that is 68885, who was second, and Virat sir was 7409 with gold. So this was just one of a demo quiz that you can take on Kahoot. Okay, so before I tell you how to use this Kahoot, how to make a quiz on Kahoot, and what all things are there in this Kahoot, I want you all to speak and what you understood from this Kahoot. क्या लगा आपको कि ये Kahoot में क्या हुआ आपके साथ? I want you all to reply now. And instead of writing it in the chat box, if it will be better if you can unmute and speak. The difference in whatever quiz that we have learned and whatever we give to students and this quiz, what is the difference that you found? I think there's a lot of dependence on memory and recall. Yes, correct. Perfectly said, sir.
Yes, It anyone? is also to identify the letters, be able to read backwards and understand Okay. the words. Okay. Total attention to be paid. Yes, perfectly said, ma'am. Okay, so when we take the quiz on the spot, depending upon what we are delivering during the lectures, तो can I say at that time student को बहुत attentive लेना पड़ेगा वो टाइम पे. उनको पता है कि यही लेक्चर यही टॉपिक पे मैम तुरंत एक क्विज लेने वाले हैं. So they should be attentive at that time. चलो attentive तो है. Can I say during that attentive even they should be quick to answer, क्योंकि जितना जल्दी आप आंसर दोगे उतना ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा. So this is one. Sir, even the alertness is Yes. we have to alert all the time. Yes, perfect. Alertness should also be there. So the same thing, can I say, it becomes, बोलते हैं ना अपन जो normal quiz करते हैं, it is a little bit different from that normal quiz. And we say Kahoot is nothing but an online game based learning platform. यहाँ पर एक word use किया, that is game based, क्योंकि it is like a fun. और यहाँ पे बोलते हैं ना अपन भी बोल सकते हैं कि yes, the one who gets rank 1, 2 and 3 will give you extra marks in their experiments. तो कैसे थोड़े बहुत बच्चे सीरियस भी हो जाएंगे and they will start doing this. और उसी टाइम पे बच्चे लोग वो लेक्चर को they will start, बोलते हैं ना attentiveness रहेगा और अच्छे से वो लोग सुनेंगे वो टाइम पे आप लोग के लिए. So this becomes, बोलते हैं ना, a great platform for students to enjoy also and to listen also and to learn also. Okay, so this, can I ask a question? Yeah, sir. Yes, sir. Yeah, I just want to know the storyline and the images that were displayed. Were they also created by you, or no, it was not created. It was not created by me. It is one of the feature which is there inside this Kahoot itself. I'll let you know what is that. See, when you go to that discover, okay, when you go into that discover option, yes, here you will see n number of Kahoot quizzes, n number of Kahoot quizzes. Whatever you want, you can take it from here and give it to your student. If you want to only take few quizzes and you want to add your own quiz over there, even you can do that also. If you will see, there are math, science, English, social studies, general knowledge, literature, history, everything is there inside this. Okay. I have just taken one example where it is just a storyline type. Right. The same way even you can do it depending upon the subject that you are teaching. I'll give you an example. Mathematics, I'll click on math. There are n number of Kahoot quizzes on mathematics. If you want, you can take a use of this and you can give it to the students directly. They can directly start playing it if it is related to your subject. So there are n number of things where you can get it. You can get it from the word that is discover. Thank you. Yes. If you want to create your own quiz, it is very simple over here. Just create on the word known as create. Create dikh raha right side pe, just click on that. I'll just try to make 2 slides for you how to make a quiz over here. Okay, thank you. Okay, go to create. Okay, this is the interface that you will be getting. Okay, suppose I want to add a title to it. Okay, so I'll go to settings. Okay, I'll just add a title. I'll say a demo quiz. Okay, if you want to give a description, you can give it. I'll say a demo quiz on COLOURS colors. Okay, you can give a cover image. I'll say add image. I can directly search that image from the Kahoot itself. There are a lot of images of colors. So I'll just type colors. I can add anything I want. So I am adding this image. Okay, I'll say that. Okay, so whenever you will start your quiz, it will show you that image and the heading of that will be demo quiz on color.
Okay, now I'll start the first question. So it says start typing your question. Okay, so I'll say identify the background color of the image. Okay, and I can add an image over here. Just red yellow. I'll just add this. Okay, and I'll give the option as say red. I can give the option as blue. I can give the option as black. I'm just giving it just for bolte na confusion ke liye, and green pe I'll give yellow. So the correct answer is the background color is yellow. So I'll just stick on that yellow so that the students will come to know that yes, this is the correct answer. And towards your right hand side, okay, can you see that time limit? This time limit, depending if you remember whose quiz mein, I have given the time limit as 30 seconds. So depending upon what question you are giving, if you are giving something to solve and you think in as you take minimum 1 or 2 minutes to solve, you can extend the time of that slide. So you can keep it either 30 seconds, either you can keep it as 1 minute or maybe 1 minute 30 seconds, depending upon the question it is. Now I know that just to identify a color, 1 minute 30 seconds is more than enough. So I'll keep it as 30 seconds. 30 seconds is sufficient. So this is what my first question is all about. Same way you can go with add question. Okay, either you can go for quiz or you can go for true and false. Suppose I'm going for a true and false. So here I can type the question as if I mix yellow and blue color, I get green color. So is it right or wrong? If you want, you can add something like a video over here. I'll say yellow and blue. I'll go to videos. So here I'm just adding one random videos. The same videos you can add where it is showing there are two colors where it was mixing yellow as well as a blue color. So you can show that over here. So I'll just click on this. So this will automatically get added into your quiz box. Sorry, my net is a little bit slow. Okay, I'll just click on add. Okay, so the video has been uploaded over here. The students can see this video. Depending upon this video, if they come to know yes, it is a false, they'll click on false. If it is true, they'll click on true. And now since they have to see a video and then they have to type the answer, I cannot keep it as 20 seconds because the video itself was 40 seconds. So I'll keep it to 1 minute. Okay. And if you remember the quiz, which I told you to do that, can I say before the quizzes, there was some image, which was a storytelling like, so that image means what you can add a slide to them. Slide is not a quiz. It is just adding few instructions below the quiz, before the quiz is known as what add slide. So this is what the slide I have added. I'll just keep it at the first part. And here I'll just type quiz on
colors identification. And you can add an image. Okay, so whenever your quiz will start, the quiz first will start with this slide, and then it will start with your first quiz and your second quiz. You can just save it, and if you want, you can preview also. So once I click on preview, this is how it will look like. I'll just show it to you. So quiz on colors identification, since I have not added any image, so it is just showing me the topic. The next one is this, identify the background color of the image. And since we know we have given 30 seconds, the timer has started. You can click on whatever the correct answer is. The third one is, if I mix yellow and blue color, I get which color? So this is how this video will play. And depending upon this video playing, they can write the answers. Okay, so this is how you can make a quiz on Kahoot. Okay, now the only thing here is, if you are going for free trial, okay, if you're going for a free version, this free version can only allow only 10 students. If you want to go for more than 10 students, then you have to upgrade few plans. Since for my students, I have upgraded it to 50 students. That why I was able to take more than 10 students. Okay, so this is what all Kahoot is all about. Okay, just a small app, but really very effective from student point of view. And here even बोलते हैं ना, teachers का skill भी पता करता है, क्योंकि how you make a quiz is more important depending upon what subject you have. You can make बोलते हैं ना mathematics very fun type in terms of this Kahoot. You can see lot of बोलते हैं ना, just for references you can go to discover and see lot of mathematics Kahoot के quizzes how they have made. Depending upon that, even you all can make that. So I hope everybody have understood what is a Kahoot and how to use a Kahoot. Okay, बोलते ना, सिर्फ बोलते ना, कभी कभी बच्चों को बोर हो रहा है, लेक्चर्स में नहीं मन कर रहा है बैठने को, you can give this quiz to them. I'm sure, pretty sure कि उन लोग का माइंड फ्रेश हो जाएगा ये सारी चीजों से. So I want now from your side, what do you think Kahoot as? क्या लग रहा है Kahoot क्या है? Will be students be loving this Kahoot? Yes. The more you use this Kahoot ना, I guarantee you आप लोग को बहुत मजा आएगा क्विज बना के बच्चों को देने के लिए, और बच्चे उससे ज्यादा एंजॉय करेंगे. So with this is all about Kahoot. Now the next session will be on World Wall, which will be taken by Helena ma'am. Thank you everyone, and thank you so much. Thank you, Rohit sir. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So I'll just share my screen. Thank you, sir. Screen is visible? Yes, ma'am. Okay. So I hope you all enjoyed with the Kahoot game app. It's a very interesting app. And let's explore one another interesting platform for online quizzes, puzzles, and all. That is a word wall. So before we'll start with this word wall, we'll just play one game, and then I'll show you how to make a quiz, how to create activities on that word wall. So it is nothing but if with the use of this word wall, we can make different activities for classrooms like quizzes, matchups, board games, and much more. The most important feature of this word wall is we have a multiple templates in that. We can create many quizzes
in many form, like match up, matching the pair, identify the figure, puzzles, crossword, and all. So multiple templates are available in the word wall. Let's see some features of this. That first is themes and options. Multiple, as I told you earlier, multiple themes and options are available. Then interactive and printable. Yes, this is again one of the most important feature. Interactive, we can play on a computer, on a mobile, on a whiteboard, and printable, at the end of the activity, we can download that activity report as a PDF file also. We can create a multiple templates. We can also publish this on a website. We can provide as a student assignment, and also by if we prepared one quiz, अगर मैंने already एक template में quiz बना दिया है, तो वो same template we can switch to a different template. वो खुद से ही वो बना के देगा in different form, 3 to 4 types. वो हमें वो बनाने की change करने की जरूरत नहीं है. Let's see. So before I'll start, I'll just give you one link on the chat box. We'll play one game first. Just give me 2 minutes. Just confirm, have you received one link on the chat box? Yes. You can open it and you can play. Yes, you can start. And I think at the end of the game, you will get the results also. It's a very simple game. And you will get a 55 seconds to complete that. The timer is also there. You will see at the corner, top corner, left side, left or right. Everyone is doing? Are you able to open that link? Yes? Yes. Okay. So have you played that? Yes. In how much time? You can give your time on the chat box, like, or you can speak also. I have put a timer for 55 seconds. Same 55. It was Okay. over by 50. And it will give you a correct answer also. Like Yes. I have put it at 10 states. So out of that 10 state, if your answer is correct, then you will get 10 out of 10. And according to that correct and incorrect, you will get the answer. Yes. Yes, 10 out Meenal of ma'am 10. is 53.4 second, right? So it's a very simple game. As an example, I have taken that. But multiple templates you can create. After this game, we can see which type of template we can create for your particular subject, whether it is science, maths, geography, political science. You can create multiple templates. You can create multiple quizzes for students. And that level is also a proper level, not it's a high language and all. We can do it at our own level. Kalyani ma'am said yes. I hope everyone is completed with this game.
Yes. So what do you think? Is it useful for students? Purposely, I've kept a very simple question like locate the state and all. But if you are any geography teacher, maths teacher, science teacher, for any particular topic, you can create a quiz in a multiple form. So whether it is useful for the students? Yes, definitely. Yes, thank you, sir. So let's see how to create that. So I'll just share my screen. You can also do it with parallelly. You can sign up with your Google account. Let's start. My screen is visible, right? Yes, ma'am. Okay, just go to a Google and type word wall. So here you will get on the first word wall .net. Everybody is doing? Yes. So just click on this. Actually, already I have my account, so just click on the sign up. It will take you to they will ask for that either Google account or your mail ID. So you can go for your Google account. You have to click on the sign up. Are you able to do that? Yes, Madam. Okay. So once you completed with that sign up, this home page will come. Right now मैंने screen share किया है, यहाँ पे word wall आएगा and then home features, community activities, my activities, create activity. आपका सबका अगर यहाँ पे आ गया है तो then we'll move further. You can do it on your phone also. No need to laptop and all. You can create your activity on mobile also. Yes. सब आ गए हैं होम पेज पे? Yeah. Just for my confirmation, okay, fine. Can we start? Create activity? Yes, ma'am. Okay. So if you see here on screen, home features, even in features, you will get the clear idea ki how to create in the different template also. Printable, how to download the file. They have given the different steps also. If you go for the community now, so here already, see here, some quizzes are already there. So you can select this also, you can edit this content also according to your level. And my activities, right now I have created 2 activities. One already हमने जो अभी game play किया था वो, and the second one is a second activity. So whatever you have created, you will get here the number of activities. Results also you can see from here, my results. And if we want to create one new activity, just click on the create activity. Okay. Now here I'll tell you one thing. For free account, you will get only a 5 activity. आप एक at a time सिर्फ 5 activity create कर सकते हो for free account, but it is again upgrade करेंगे, यहाँ पे upgrade का option भी है.
I think if you want 30 and more activity, 30 plus activity, then it is a paid version. Yearly you can give, monthly you can give, like that way. But for free account, you can create a 5 activities. So here, if you see here, different interactives is given: quiz, matchup, random wheel, find the match, group shot, open the box, random cards, matching pairs, missing word, multiples are there. So this all, whatever you are seeing right now on the screen, you can get in the free account. And if you want a paid version, so here it is written upgrade and pro templates. So जो नीचे के जितने भी templates है, जो blurred आपको दिख रहे हैं, वो paid version के लिए है. But I think for students, इतने free interactives is okay, right? 20 templates you will get free for per activity. So let's see, we can start with any one template. जो हमने play किया था अभी, that state and Indian map is label diagram. So in that you have to affix an image map and then you have to give a state name. So you can do for your subject, you can take any template, you can create according to your subject. Right now आपको जैसे आपको अगर subject पे करना है तो आप कर सकते हो. अभी I'll just go for matchup. Slowly, I think. Yes. So when you open this, here first they will ask for activity title. I'll just take one simple example like a type of course, right? You can take any activity. And here for matchup, in one side it is written keyword, another side definition. So what I'll do, in keyword, I'll just paste images. Okay, we will upload an images and definition will write the name. Okay, so first I'll just give a definition like force, type of force. So we'll take magnetic force. Then minimum 3 item we can take, or max, here it is written add an item के नीचे लिखा है max 30 at a time you can take. Then frictional force, you can do it for your course, your subject. आप आपके subject के लिए बना सकते हो. For example, I'm taking this gravitational force. And let's do one more, muscular force. Right? So here in definition, I have written the force name, and in keyword will upload an image. So when you click on this add image, you will have a 2 option. Search for image. If you write here magnetic force, you will get option. Or if you don't want from here, then you can select, see here magnetic force, multiple images are available. You take any one, so it will come here. In other case, second frictional force, if you don't want from here, then you can upload from your device also. Here upload, they will ask for this from your device, your folder. So I'll just take a frictional force from my device, it will come here. Gravitational force will take from here. So you take any one, gravitational force will take this, for example, and muscular force will take. Okay, so here in this activity, what we have done, instead of keyword, we have put images, and
in definition, we have given a name of a force. Okay, so let's complete this. Click on done. आपने सेम एक्टिविटी किया है या कुछ दूसरा आपके सब्जेक्ट वाइज आप कर रहे हैं? Yes, can anyone? Yes. Same KNM. Okay, okay. So after done, you will get like this way. Okay, here again you have an option that आप अगर नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस देंगे. यहाँ पे टाइमर है, नन, काउंट अप, काउंट डाउन. इफ यू काउंट अप 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो ये जो एक्टिविटी है कितने टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए, आपको अगर ऐसे टाइमर लगाना है तो यू कैन काउंट अप और काउंट डाउन. ओके, विल डू इट फॉर 30 seconds, for example, right? And count down or count up, whatever. Random, अगर हर एक टाइम पे आपको लेआउट सेम चाहिए या डिफरेंट चाहिए, दैट आल्सो वी कैन डू. एट द एंड ऑफ गेम आंसर आपको शो करना है, नहीं करना है, दैट यू कैन डू. एंड अप्लाई दिस टू दिस एक्टिविटी, राइट? तो ये हमारा हो गया कंप्लीट. नाउ अभी एट द राइट हैंड साइड कॉर्नर पे यू विल सी अ स्विच टेम्पलेट. It is written like a switch template. Are you able to see that? Yes, ma'am. Top corner, right? So here it is. show all करती हूँ मैं आपको. तो इंटरैक्टिव्स दिए हैं, वहां पे अगर इंटरैक्टिव्स देखो, मैच अप, फाइंड द मैच, फ्लिप टाइल्स, मैचिंग पेयर्स, मेट चेस, ओपन द बॉक्स, क्वीज, रैंडम कार्ड्स, रैंडम व्हील. ओके, और बाकी का थोड़ा ब्लड है. तो जो ब्लड है दैट इज अ पेड वर्जन, बट इन अ फ्री यू विल गेट दिस मच ऑप्शन. So it is enough for our student, I think. So I'll show you first. जैसे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट, अभी हमने शेयर किया नहीं है स्टूडेंट को. आई एम जस्ट शोइंग हाउ टू क्रिएट द एक्टिविटी एंड हाउ इट लुक लाइक, राइट? सो व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट, इट विल शो लाइक दिस वे. हमने 30 सेकेंड रखा था, तो जस्ट विल डू दैट. विल पुट दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज मस्कुलर फोर्स, magnetic force and gravitational force, right? And submit answer. So हमने किया था, at the end show answer, so you will get a correct answer, and you will get at the end that score board, that 4 out of 420, or timing in how much time you have completed. Leaderboard, show answer, start again. Leaderboard, when you click, you have to give your name. So you will get the according, मतलब students अपना अपना नाम ऐड करेगा, तो you will see this name of the student on the leaderboard. Now I'll show you same activity. How can we do that? So in interactive, हमने matchup use किया था जब when we created that activity. But if I want a different template, हमें वो different template हमें create नहीं करना पड़ेगा, वो खुद से बनाएगा. But just we have to select that interactive from that different template, switch template. So if I select find the match, so how this same activity will look in find the match, that we will see. It's opening. Are you able to switch the template? Yes. Yes. See, I've switched to a find the match. Now I'll start this activity. So same activity will look
like this way in find the match. Gravitational force, so you have to click on this. Again, magnetic force, this. Muscular force, right? And last one is by default, it's a frictional force. So again, you will get the answer at the end and the timing. Okay. And if I want in the quiz form, so whatever I have shown you the different templates, that templates you will get in quiz form. These activities look like this way. Magnetic force, this frictional, gravitational, and muscular. So in this way, you can create the activity with the different templates. So in this word wall, yeah, just only वो जो हम रहता है हमारा क्विज रहता है 4 ऑप्शन रहता है बट वही 4 ऑप्शंस को अगर हम लोग इंटरेक्टिव मोड में बना देते हैं अगर इंटरेस्टिंग बना देते हैं तो स्टूडेंट विल एंजॉय दिस so this all about that word wall and yes how to publish how to assign the student that I'll show you here you will get a share option so just click on that publish and here you will get one link just copy it and that link you can paste like you can use this multiple you can through mail Facebook Twitter or whatever platform whatever you are using right now हमने Zoom पे किया था तो जहाँ पे आपको paste करना है you can paste that and students can enjoy this activity so in this way you can publish you can share your content even one more option here is edit content is there ऑलरेडी आपने बना दिया है बट अगेन आपको कुछ एडिट करना है वो एक्टिविटी में कुछ ऐड करना है या कुछ चेंज करना है यू कैन डू दैट ऑल्सो सेट असाइनमेंट में यू कैन गिव योर डेडलाइन लाइक नेम आना चाहिए स्टूडेंट का नहीं आना चाहिए तो यू कैन यू यहाँ पे सिलेक्ट मत करो डेडलाइन अगर देना है कुछ पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम पे आपको उनको देना है एज असाइनमेंट दैट यू कैन डू दिस ऑल्सो लीडर बोर्ड चाहिए शो आंसर करना है नहीं करना है दैट यू कैन यूज फ्रॉम दिस सेट असाइनमेंट सो ऑल ऑप्शन यू विल गेट हियर सो दिस ऑल अबाउट वर्ड वॉल आई थिंक आपने आपका सब्जेक्ट का प्रिपेयर किया है नहीं किया आई डोंट नो यस हैव यू मेड फॉर योर सब्जेक्ट और सेम एक्टिविटी यू हैव प्रिपेयर्ड लाइक टाइप ऑफ फोर्स मैम हाउ टू सेव द एक्टिविटी इट विल सेव ऑटोमेटिकली So when you again open that word wall, when you log in to your account, it will show in your activity like here. Just 1 minute. You will get here my activities. Yes? Any questions? Yes, participants, any questions? So how many of you have created a quiz? अभी किसने quiz बनाया है for your subject, your same activity? Do you think it is interesting for students? Yes. Yes, how many activities we can do at a time like for a free account like if you are doing for particular one account you can create a 5 activities only but if you want to make more 30 plus then you have done it is a paid version so you can upgrade paid version if you want to get then you can just click on the upgrade and they will give multiple option like basic standard pro like that way so here they have shown also okay interactive 18
But again, interactive 18s are available in free as well. And number of resources you can create is 5. But if you are going for a paid version, unlimited resources you can create. And it is, yes, school plan is also there. मतलब अगर आपका school को अगर license लेना है, that this option also work. Any more questions? So I hope you enjoyed with that game like quiz, fun kind of quiz with the Kahoot and word wall. Any questions from your side? Yes. Okay, Helena ma'am, thank you so okay. much for this Okay. wonderful session on WordWall. Thank you very much, Pratik sir. Thank you, Helena ma'am, and thank you, Rohit sir, for this wonderful session. Thank you, participants. Please fill the feedback form